श्लोकों के लिए तैयार है? Mercy of Srimad Bhagavatam. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Are you happy today? Rishi Gaurita ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki. Veda Bhakti. Who's up with me? Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janmalama Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya
Happy Chandan Yatra. Today is the start of that festival. शुभ चंदन यात्रा आज इस महोत्सव की शुरुआत हो रही है. Saurabh. And so this auspicious day also of Maharaj's और आज शुभ दिन है, महाराज के आविर्भाव का दिवस भी है. Parents' Day celebration. आविर्भाव महोत्सव. And we need to get mercy. You have Krishna knows that. और जो भी आपके संदेह है, कृष्णा उसको जानते हैं. Whatever problem, anxiety you have, Krishna also knows that. जो भी आपकी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो भी कृष्ण जानते हैं. So Krishna in the form of Srimad Bhagavatam can answer and solve all of that. तो कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में सारी चीजों का समाधान और उत्तर दे सकते हैं. Everyone's looking for answers and the guidance. सभी लोग उत्तर और मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं. So Krishna is Adi Guru, he is original Guru, Chetu Guru, and he is manifesting through the Shastra as well. कृष्णा आदि गुरु है, चैत्य गुरु है, और वो शास्त्र के माध्यम से भी प्रकट होते हैं. But you have to listen. We have to listen very closely. लेकिन हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा. Solve, then you'll be more peaceful, more happy. जब सब कुछ समाधान हो जाएगा, तब आप ज़्यादा शांत So I'm hoping that will happen today. मुझे उम्मीद है आज ही होगा. If we get the mercy of the Srimad Bhagavatam. अगर हमें श्रीमद् भागवतम की कृपा मिलती है. We need miracles. We need the impossible to become possible. हम चाहते हैं असंभव संभव कैसे हो सकता है. Can we just turn this one off? इस पंखे को बंद कर दीजिए. Alright, so let us say our prayers before the Bhagavatam. Invoke mercy. तो श्रीमद् भागवतम से हम प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी कृपा को हम आवाहन कर सकें. Just this one. That one's on? Okay? Everyone's comfortable? Everyone feels good? सभी ठीक हैं? सबको अच्छा लग रहा है? You feeling positive? आपको थोड़ा सकारात्मक You feeling महसूस हो रहा है? enthusiastic? आपको उत्साह महसूस हो रहा है थोड़ा? You should. होना चाहिए. Narayanam namaskritya Naram chava Yat kripa tamaham bande Shri Gurum Dinatarane Seva Karanda Anagari Anande Bolo Hari Hari Hari-katha Krishna-katha Hari-katha Krishna-katha Sechakar Golamka Pare Manamora
Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki Samaveda Bhakti Vrinda ki. So it's talking here that the conditioned soul is afflicted by so many types of miseries and anxieties in the material world. तो बताया जाता है बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत तरह के भौतिक कष्ट और प्रताड़ना यहाँ मिलती रहती है उसको. Everyone is suffering because of that. So much disturbance is there. तो इतनी सारी परेशानियों में सभी लोग पूरी तरह से व्यस्त हैं. So if we come in contact with Srimad Bhagavatam and hearing and chanting in the process of devotional service, तो अगर हम श्रीमद् भागवतम के संपर्क में आते हैं और श्रवण और कीर्तन भक्ति भाव से करते हैं, you get a chair from Mataji. माता जी के लिए एक कुर्सी लेकर आइए. Huh? Oh, okay. And our friends, our society, always so many problems, so many difficulties. हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारा समाज हमेशा कुछ न कुछ समस्या परेशानी देता है. Because everybody, especially in Kali Yuga, they're very disturbed condition. विशेष करके कलियुग में स्थिति लोग की हमेशा परेशान रहते हैं. They're disturbed in their mind, they're disturbed in their health. वो अपने मन में परेशान है, स्वास्थ्य में परेशान है. So many problems, endless problems and difficulties, obstacles in the material life. और भौतिक जीवन में अनेक समस्या, कोई अंत ही नहीं होता समस्याओं. Nobody's asking for all of this. कोई भी इन चीजों की मांग नहीं It's करता. just automatically coming onto us. ये अपने आप ही हमारे ऊपर आ जाता है. So always putting us in trouble and stressful situation. तो हमेशा हमें समस्याओं में और तनाव में डालता है. So there's no peace of mind. तो कोई मन की शांति. Everyone is very much disturbed. हमेशा सब परेशान रहते हैं. And this is all because of so much sinful activity, sinful reaction. और ये सब हमारे पाप कर्म के फलों का कारण है. All of the punishment and the suffering that comes, this is the karma pala. ये सारा दुख या दंड मिल रहा है, ये सारे कर्म का फल है. And because we're in a suffering condition, then naturally we're disturbed, and we're also becoming disturbing to other people. तो अगर हम खुद परेशान हैं, हम दूसरे को भी परेशान ही करेंगे. So those people in our life who are not Krishna conscious, they're disturbed whether they realize it or not. तो जो व्यक्ति हमारे जीवन में है, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो परेशान है. हो सकता है Whether they'll admit it or not is another story. हो सकता है वो बात हमारी माने या ना But माने. definitely they're disturbed. लेकिन निश्चित ही वो They're बहुत परेशान है, agitated. विचलित हैं. So only they can bring agitation, disturbance into your life. तो वो हमारे जीवन में भी यही परेशानी और विचलन ला सकते हैं. This is the nature of the material world. It's a prison house. ये है भौतिक जगत का स्वभाव, ये है कारागार. Krishna said to Kalayama Shasvatam, I made it to be a temporary, miserable place and existence. कृष्ण कहता है दुखालय शाश्वतम, ये अनित्य और दुखों से भरा हुआ जगह. My Gurudev used to little laugh and he said if Krishna wanted this place to be happy, blissful place, he would have made it that way. और मेरे गुरुदेव हंस के कहा करते थे, अगर कृष्ण और ज्यादा उलझन में डालता है, इसको समझ भी नहीं पाते. And the more we try to make different adjustments mentally, psychologically, physically, it only doesn't really work, only complicates the situation. और जितना ज्यादा अपना मन लगाते हैं, अपना शक्ति लगाने का, अपना सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं, और समस्या और ज्यादा जटिल. So this becomes even more disturbing. तो इससे हम और ज्यादा परेशान Because not होते हैं, finding any relief, any solution. क्योंकि कोई राहत, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा. And then we become overwhelmed by this anxiety, even we become depressed, disturbed. हम इस चिंता से पूरी तरह से इतने प्रभावित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम They become hopeless, they want to give up even their life. उदास होकर लोग अपना जीवन तक त्याग कर देना चाहते हैं. Because they don't have any solution. क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं है. And the so-called solutions of the mankind, it only seems to make matters worse. और ये जो नाम मात्र के समाधान जो मनुष्य तैयार करने का प्रयास कर रहा है, ये और समस्या में So this system is built like that. Krishna created this place like that. तो कृष्ण ने ये जगह ऐसा ही बनाया है. If this is a blissful, happy place, or it's like heavenly planets, then it's very difficult to go back to Godhead from heavenly planets. तो अगर कृष्ण इसको आनंदपूर्ण जगह स्वर्ग के लोक की तरह बनाते, तो स्वर्ग लोक से भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं. Because their enjoyment is too much high. क्योंकि वहाँ पे भोग विलास बहुत ज्यादा है. So even they're lamenting that we have such nice enjoyment, we're so attached enjoying here. Those people in the earthly planet, they're more fortunate because they can go back to Godhead. It's very difficult to go back to Godhead from heavenly planets. तो स्वर्ग लोक में हो सकता है बहुत भोग विलास हो, भोग विलास में आसक्तियाँ हो, लेकिन अगर आपको पृथ्वी लोक में है तो आप ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि यहाँ से आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं. So also this age, the Kali Yuga, is most degraded, sinful age. और ये कलयुग जो है सबसे ज्यादा अधम पापमय युग है.
and most polluted, contaminated environment consciousness. और बहुत दूषित और चेतना को गंदा करने वाली It's परिवेश very है। difficult to purify consciousness and elevate consciousness in such a sinful atmosphere. तो ऐसे पापमय परिवेश में अपनी चेतना को शुद्ध करना और उसको उन्नत करना बहुत ही कठिन है। And practically we don't even know how to do, what to do, even materially or spiritually. तो हमें व्यवहारिक रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्या भौतिक रूप से करें, क्या आध्यात्मिक रूप It's से a करें। really conditioned soul. Prabhupada said they don't know what to do, what not to do. तो बताते हैं प्रभुपाद बद्ध जी को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। We don't know what's best for us. We don't know really how to benefit ourselves. हमें ये नहीं पता मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं कैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा लाभ दिला We सकता हूँ। think we do, हम सोचते हैं, हम जानते but हैं, the results show repeatedly that we don't really know how to solve the problem and to put ourselves in a better position materially or spiritually. लेकिन परिणाम हमें दिखा रहा है, हम खुद नहीं जानते हैं कैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छी भौतिक स्थिति में या आध्यात्मिक स्थिति में So लेकर आ those सकते हैं। repeated attempts at trying to understand and solve our problem, it just makes everyone exhausted and more disturbed. तो इतना बार-बार प्रयास करना अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए, इसमें लोग और ज़्यादा थक जाते हैं और ज़्यादा We परेशान हो become जाते more and more frustrated, हैं और ज़्यादा हताश होने लगते हैं more and more tired, more and more fed up about the materialistic life. और ज़्यादा हम पूरी तरह से भौतिक जीवन से थकने लग जाते हैं। And it's designed just for that thing, और ये बनाया ही गया है इसी के लिए that the living entity will lose all faith in materialism, कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में सारा श्रद्धा and खो thinking देगा that they can be peaceful and happy in a temporary miserable place. और ये विचार छोड़ देगा कि इस भौतिक अनित्य जगत में वो किसी तरह से सुख शांति से रह सकता है। So it says when you're exhausted and frustrated, disappointed, this is very good for your spiritual life. अगर आप ये देख पा रहे हैं, आप पूरी तरह से थक गए, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत Mother अच्छा है। Devahuti, she said to her son, okay, I've had it materially. माता देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, कपिल देव से, Diet complex, more perplexing. और जितने वादे किए गए हमें ये सारे समाधान हमें इनसे मिलेंगे, वो हमें और ज़्यादा जटिल परिस्थिति में डाल रहा है। So उलझन में डाल then रहा है। the living entity may think, okay, I need to get liberated from this material platform, materialistic situation. तब कोई जीवात्मा सोचता है कि मैं इस भौतिक स्तर से मुक्त होना चाहता हूँ, So they'll seek a spiritual solution. तो वो आध्यात्मिक समाधान ढूंढने का प्रयास करते So हैं। Krishna and Krishna devotees coming, speaking Srimad Bhagavatam, this is spiritual solution meant for those people who want to get out of this place, get out of this materialistic entanglement and suffering condition. तो कृष्णा के भक्त आते हैं और श्रीमद् भागवतम बताते हैं ताकि ऐसे बद्ध जीव जो मुक्त होना चाहते हैं और अपने दुख में से परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके So लिए this समाधान। is the means of purifying the consciousness, तो ये है आपका तरीका चेतना को शुद्ध कर पाने का। getting free from all the sinful reactions and the suffering from the sinful reactions, सारे पाप कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और जिस पाप कर्म की वजह से आपको दुख मिल रहा है, and then getting spiritual intelligence and faith, और आपको how to आध्यात्मिक move forward in the spiritual life. और कैसे आपको आध्यात्मिक बुद्धि मिलेगी, विश्वास मिलेगा, कैसे आप भक्ति जीवन में और आगे बढ़ This सकते हैं। direction is coming directly from Krishna, Krishna's pure devotees. तो ये सीधे सीधा मार्गदर्शन कृष्णा और कृष्ण के शुद्ध भक्त के माध्यम से आता है। Krishna is coming here into the material world to give direction, speaking Bhagavad Gita, तो कृष्ण इस भौतिक जगत में आ रहे हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए, भगवत गीता बताने to के help लिए, the conditioned souls, suffering souls. ताकि बद्ध जीव जो दुख में परिस्थिति में उनकी मदद की जा And the सके। Lord's devotees, they're also coming and they're speaking Srimad Bhagavatam. और भगवान के भक्त आते हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम पे कथा करते हैं। And that is also meant how to purify our consciousness, elevate our consciousness, और वो भी बना है कैसे हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, how to get free from all of this mental agitation and disturbance. कैसे ये मानसिक विचलन से और परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। Right? All of that disturbance is due to sinful reaction. ये सारी परेशानी आपके पाप कर्मों का फल है। So Krishna says, if you surrender to me in pure devotional service, I'll destroy the sinful reactions. कृष्ण बताते हैं अगर आप शुद्ध भक्ति से मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपके सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट And कर all दूंगा। those sinful reactions, this is what is causing our suffering condition. और ये सारे पाप कर्मों की वजह से ही आप सारे दुख होंगे। So we link into this process of pure devotional service to think to surrender to Krishna. तो अगर हम अपने आप को इस शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, सोच करके मैं कृष्ण को शरणागत करूंगा, Then Krishna says that I'll destroy the sinful reactions and the suffering that is coming with that. और कृष्ण बताते हैं मैं आपके सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा जिसकी वजह से आप सारे दुख होंगे। So real intelligence in the human form of life is how to do this tapodivyam, divine austerity.
तो असल बुद्धिमानी है इस मनुष्य जीवन में कि कैसे मैं ये तपोदिव्यम कर सकूं, purify all of this contamination and sinful desires, attachments, and reactions, कैसे मैं इस पाप कर्म की इच्छाओं, पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं और फलों से अपने आप को मुक्त कर so सकूं, that we can become purified, liberated in our consciousness, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके और हम मुक्त हो सके, and ultimately how to go back home, back to God. और अंततः कैसे हम भगवत धाम वापस आ सके। So that is what our effort is here today as well. तो आज के दिन भी हमारा यही प्रयास रहेगा। How can we surrender to the Prophet Krishna? He showers mercy. Also, Srimad Bhagavatam is showering तो mercy. जैसे कृष्णा कृपा बरसाते हैं, श्रीमद् भागवतम भी अपनी कृपा बरसाते हैं। So we're offering these prayers in order to get the mercy from Srimad Bhagavatam. तो हम ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कृपा को पाने के लिए। Because without that special mercy, we cannot understand, we cannot do anything spiritually or materially. बिना इस विशेष कृपा के ना तो हम कुछ आध्यात्मिक ना ही कुछ भौतिक चीज पालन कर सकते हैं। So we have to beg for some special mercy. तो हमें कुछ विशेष कृपा के लिए भीख मांगनी होगी। And therefore Krishna will speak through the Bhagavatam and he'll be able to answer all of these, specifically all of these questions and doubts and problems that we have. ताकि कृष्ण श्रीमद् भागवतम के माध्यम से बात करेंगे और विशेष करके हमारे सारे प्रश्न, सारे संदेह को नष्ट करेंगे, उसका उत्तर देंगे। We may go to family and friends, tell them our problems. हम हो सकता है अपने दोस्त के पास, परिवार के पास जाएं, अपने समस्याओं को They may बताएं। go to psychologists, psychiatrists. हम हो सकता है मनोचिकित्सक के पास जाएं। They may go to all of these different personalities, but really they cannot solve it. इतने सारे व्यक्तियों के पास जाइए आप, उनमें से कोई भी आपका समाधान नहीं Because कर all सकता। of that suffering, all that disturbance is because of karma. क्योंकि ये सारे दुख कष्ट ये कर्म के कारण हैं। So only Krishna can destroy one's karma. केवल कृष्णा किसी के कर्म को नष्ट कर So सकता if है। we accept Krishna's process of purification and surrender, then he says, I'll show you special mercy and destroy all of this karma pala. तो हम अगर हम कृष्ण की प्रक्रिया को चुनते हैं, शरणागत करने की श्रवण की प्रक्रिया को, तो कृष्ण कहते हैं मैं आपके सारे कर्म फलों को नष्ट Then you get the relief. तब आपको राहत मिलेगी। Then your mind will become more peaceful. Then you'll be able to hear more clearly further type of instruction from Srimad Bhagavatam. तब आपका मन ज्यादा शांत रहेगा और आप श्रीमद् भागवतम के आगे के निर्देशों को अच्छे से पहले मुझे इसको साफ करना है। And then automatically all these things that are disturbing within the mind and senses, all of that will slow down. It will become more pacified. और अपने आप ही जो चीजें आपको मन और इंद्रियों को परेशान कर रही है, वो धीरे-धीरे शांत होगी और धीरे-धीरे कम हो जाएगी। Once we become more pacified, then we'll be able to hear better and to get specific instruction as to how to be guided in our life in the best way possible. और जैसे जैसे हम शांत होने लगेंगे, हम और ज्यादा बेहतर सुनने लगेंगे, हमें मार्गदर्शन मिलेगा कैसे हम विशेष तरीके से अपने भक्ति जीवन And में that's आगे all बढ़ सकते Krishna's mercy. हैं। और ये सब है कृष्ण की He कृपा। comes directly to preach. वो सीधा-सीधा आ रहे हैं प्रचार He करने sends के लिए, his devotees to अपने preach. भक्तों को भेज रहे हैं प्रचार करने के They लिए। give us all of the scriptures, all of the law books, so that everything is an authorized scientific process. तो हमें सारा शास्त्र दे रहे हैं, ये सारी किताबें दे रहे हैं कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। Mahaprabhu is preaching to the Mayavadis, Prakashananda Saraswati Thakur. महाप्रभु मायावादियों को प्रचार कर रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर। Then he admitted that Mahaprabhu's argument, it was so logical, it made so much sense. और उन्होंने अंत में स्वीकार किया कि महाप्रभु के तर्क इतने सही हैं, इतने सारी And it was so scientific presentation, और इतना वैज्ञानिक प्रस्तुति उन्होंने दिया, not emotional, not sentimental. भावुक होके भावनाओं में बह के नहीं। Sometimes people become very, so-called enthusiastic, aggressive, right? But it's just all emotion. There's no science behind it. तो कभी-कभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह आ जाता है, बहुत जोर से गुस्से से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन ये सब भावनात्मक बातें हैं, ये सब वैज्ञानिक नहीं। They're just trying to use like a brute force. जो बाहर से केवल संकेत ऐसे व्यवहार प्रकट कर रहे थे अच्छे, Doing it in such a nice way, in a nice gentlemanly way, और इतने अच्छे तरीके से इतने सभ्य व्यक्ति की तरह अपनी बातों को प्रस्तुत कर but रहा है, using very, very strong logic and a scientific presentation. लेकिन साथ ही साथ बहुत ही मजबूत तर्क और वैज्ञानिक आधार के माध्यम से प्रस्तुति दे रहा है। That we became purified and convinced by that presentation of the absolute truth. कि हम उस परम सत्य की प्रस्तुति से हम शुद्ध हो गए और हम आश्वस्त भी हो गए, And that way they were all converted. और इस तरीके से सभी लोग परिवर्तित हो So गए। we need a special mercy from Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees. हमें विशेष कृपा की जरूरत है महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों से, Because the biggest offenders, they're the Mayavadis. क्योंकि सबसे बड़े अपराधी हैं मायावादी। Right? So we're offenders, but we're not hopefully we're not the biggest offenders. और
हो सकता हम भी अपराधी हैं, लेकिन उम्मीद है हम सबसे बड़े अपराधी में से नहीं। So if Mahaprabhu can shower mercy on those personalities, then what about us? तो महाप्रभु अगर ऐसे लोगों के प्रति ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहना? If he can convert them, why he cannot convert us? अगर वो उनको परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं बदल पा रहे? We can think, oh, this is impossible. How we have to do some miracle, isn't it? यहाँ तक कि ईसा मसीह और कोई भी पैगंबर आए, उन्होंने कुछ न कुछ जादू किया। Otherwise, nobody will believe it. Nobody will accept it. वरना कोई उनको स्वीकार नहीं करता, उनकी बात को विश्वास नहीं करता। Even when they met Srila Prabhupada, they said, "Show us some mystic potency, some shakti. What do you have?" जब लोग शिला प्रभुपाद से उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, आप हमें कुछ चमत्कार करके दिखाइए। Because everybody wants to see something, right? सब लोग कुछ चमत्कार देखना And then चाहते हैं। Prabhupada, he pointed to all the Western devotees and he said, you see these people, what were they before? Now they're trying to become Vaishnavas. और प्रभुपाद ने अपने विदेशी भक्तों की तरफ उंगली इशारा करते हुए कहा, ये लोग देखो पहले क्या थे, अब ये वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। That is a miracle. That's impossible. ये असंभव है। Even when Prabhupada coming on Jaladuta, he's saying, Krishna, how are these people who are completely in Tamagun, Rajagun, how are they going to accept the message from the Srimad Bhagavatam? यहाँ तक कि प्रभुपाद जलदूत से जा रहे थे, तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, कैसे ये लोग जो पूरी तरह से तमोगुण में, रजोगुण में हैं, ये भागवतम क्या समझ पाएंगे? But Prabhupada said that because my Gurudev wants, Mahaprabhu wants, then it must happen. लेकिन प्रभुपाद ने कहा, महाप्रभु चाहते हैं, मेरे गुरुदेव चाहते हैं, तो अवश्य होगा। Because Mahaprabhu wants to deliver all of the conditioned souls all over the world. क्योंकि महाप्रभु पूरे विश्व में सभी बद्ध जीवात्माओं को मदद करना The चाहते हैं। Prabhupada said, well, Krishna, you're putting them in Maya, then you can also get them out of Maya. और प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण आपने उनको माया में डाला है, आप ही उनको माया से बाहर भी निकाल सकते हैं। So we need this type of special mercy. तो हमें ये विशेष कृपा पाने की जरूरत है। Because we're not going to do it on our own strength. क्योंकि हम खुद की शक्ति से ये नहीं करने वाले। Even if you intellectually accept it, that's also not enough. हो सकता है आप अपने मन में बात स्वीकार भी कर ले बुद्धि में, We लेकिन need फिर भी a पर्याप्त change of heart. हमें पूरा अपना We need a हृदय change of consciousness. चेतना की The परिवर्तन। heart is like a stone. हमारा हृदय पत्थर के जैसा हो चुका So है। only Mahaprabhu, he can even melt the stone. महाप्रभु पत्थर को भी पिघला सकते हैं। So we need a heart melted. We need a miracle. We need a mercy. पिघलने की जरूरत है, चमत्कार की, कृपा की जरूरत है। It's not going to come just sitting trying to understand this in some intellectual way. ये बस बैठ के अपना बुद्धि लगा के समझने से के प्रयास से नहीं होने वाला। Oh, let's see from scholarly academic point of view, what is this philosophy? चलिए देखते हैं अपना बुद्धि विद्वता लगा के कि इस सिद्धांत में क्या क्या बातें होती हैं। We get mercy from Krishna, Mahaprabhu, and the Srimad Bhagavatam, you'll automatically understand all philosophy. अगर आपको कृष्ण महाप्रभु श्रीमद् भागवतम की कृपा मिलेगी, अपने आप ही आप सारा सिद्धांत समझ You'll जाएंगे। automatically become detached from all this materialism. अपने आप ही आप सारे भौतिकतावाद से निरासक्त हो जाएंगे। That's what it's saying. All of this thing will be cleared by the mercy of Srimad Bhagavatam. ये बताया गया श्रीमद् भागवतम की कृपा से ये सब कुछ साफ हो जाएगा। My godbrother, he had so many problems, so I said, go to Gurudev, only Gurudev can solve your problem. मेरे गुरु भाई के पास बहुत सारी समस्या थी, मैंने कहा गुरुदेव के पास जाइए, उनके पास सारी समस्या का समाधान है। I cannot even begin to understand how to solve your problem. मैं तो सोच भी नहीं पा रहा तुम्हारी समस्या का समाधान शुरुआत कहाँ से करूँगा। Then Gurudev came out of his room and then I pushed him, go to Gurudev. और गुरुदेव जब कहा, so and so दास, तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं ना? And then Gurudev said, how long you're here? और गुरुदेव ने पूछा कितने दिन यहाँ रहने वाले हो? And he said, 8 days. उन्होंने कहा 8 दिन रहने वाला हूँ। So Gurudev said, okay, every day you come to Srimad Bhagavatam class. गुरुदेव ने कहा हर दिन तुम श्रीमद् भागवतम क्लास में आना। And you listen very closely in the Srimad और Bhagavatam. तुम बहुत ध्यान से श्रीमद् भागवतम क्लास सुनना। And whatever question, whatever problem you have, by the mercy of Srimad Bhagavatam, it will be cleared, it will be solved. और जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम की कृपा से सारा समाधान, सारा उत्तर हो। And if at the end there's some lingering thing, then we'll just clarify all of that. और अंत में कोई चीज जो आपको परेशान कर रही होगी, वो भी हम साफ कर देंगे। So Gurudev has so much faith in the Srimad तो Bhagavatam. गुरुदेव के पास कितनी श्रद्धा थी श्रीमद् भागवतम। Everything can be solved by mercy of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम की कृपा से सब संभव हो सकता है। So that's why Gurudev didn't say, oh, what's your problem? Let's try to solve your problem. He said, just come to the Srimad Bhagavatam. गुरुदेव ने ये पूछा शुरू नहीं करा, चलो तुम्हारा समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे Try करेंगे, to बस श्रीमद् let भागवतम it enter inside of your ear. और श्रीमद् भागवतम में आना और अपने कान में इसको घुसने देना। And first of all, it will purify your और consciousness. सबसे पहले तो आपकी चेतना शुद्ध होगी।
And as you become more and more pure, you get your intelligence back, you become more peaceful, then you'll be able to understand all of these points, how to move forward. और जब आप और ज़्यादा शुद्ध होंगे, आपकी बुद्धि धीरे-धीरे वापस आने लगेगी, तब आप समझ पाएंगे कि ये सारी बातें क्या हैं, Then, चीज़ों okay, को। some confirmation, some clarification at the end, that is also important. और अंत में कुछ पुष्टिकरण, कुछ आपको स्पष्टीकरण चाहिए, तो वो भी जरूरी है। So our Gurudev gave us such faith in Srila Prabhupada and his purports, and also in this Srimad Bhagavatam. तो हमारे गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद की किताबों और उसके तात्पर्यों में आप श्रीमद् भागवतम ऐसी श्रद्धा के साथ सुन पाएंगे। Then you'll be able to get mercy from Srimad Bhagavatam. तब आप श्रीमद् भागवतम की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। And we need a lot of mercy. हमें बहुत कृपा की जरूरत We है। must realize that. हमें अवश्य इसको अनुभव The करना whole होगा। process is based on getting mercy. ये पूरा प्रक्रिया कैसे मैं कृपा प्राप्त कर सकूं, इसी पे But आधारित if है। we think we're fine, we have everything figured out, लेकिन अगर हम सोचते हैं मैं सब कुछ ठीक है, मैं we're सब कुछ मेरे thinking पता we're लगा लिया, nicely well situated, हम सोचते हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं, we don't think we really have any problem, हम सोच भी नहीं रहे हमारे पास कोई समस्या है, then you cannot beg, cry for mercy. तो आप कृपा के लिए भीख मांग नहीं सकते, रो नहीं Because we सकते, think everything already solved. क्योंकि हम सोच रहे हैं सब ठीक हो चुका है। Prabhupada said, if you don't think you have problem, you don't need a guru. तो बात कहते हैं अगर आपको लगता नहीं आपके पास कोई समस्या है, तो आपको गुरु की जरूरत ही You नहीं, don't need any instruction. आपको कोई निर्देश की जरूरत नहीं, You're not seeking any instruction. आप कोई निर्देश ढूंढ ही नहीं रहे हैं। Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. So let's turn to the text today. तो चलिए आज के श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Let's see what comes out of that. चलिए देखते हैं क्या चीजें बाहर आती हैं। I understood today we have to speak Srimad Bhagavatam. मैं आज समझ पाया कि हमें श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करनी है। Give you a nice shloka. आपको अच्छा श्लोक देना है। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading in Srimad Bhagavatam in the 3rd canto, तो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद chapter 4, अध्याय 4, Vidura approaches Maitreya Rishi, विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जा रहे हैं and today we'll read text 25. और श्लोक संख्या 25। Please repeat. कृपया दोहराइए। Vidura Uvadaha Aha. Yoga Ishvara Yoga Ishvara. Ishvara Ishvara. Te Vaktum Vaktum. Bhavan Bhavan. Naha Naha. Arhati Arhati. Yat Yat. Hi Vishnu Vishnu. Britya Vidya. Swabritya Savritya. Atakrita Rate Vaktum Bhavan No Rahati Yadvi Vishnu Britya Swabrityartha Katash Charanti. Please repeat. कृपया दोहराइए। Vidura Uvacha. Vidura Uvacha. Vidura said, Vidura said. विदुर ने कहा, विदुर ने कहा, Jnanam, ज्ञानम, knowledge, knowledge, ज्ञान, ज्ञान, Param, परम, transcendental, transcendental, दिव्य, दिव्य, Swaatma, स्वात्मा, regarding the self, regarding the self, स्वयं के विषय में, स्वयं के विषय में, Raha, राह, mystery, mystery, रहस्य, रहस्य, Prakasham, प्रकाशम, enlightening, enlightening, प्रकाश, प्रकाश, Yat, yat, which which, जो, जो, Aha aha, said, said, कहा, कहा, Yoga Ishvara, योगी ईश्वर, the master of all mystics, the master of all mysteries, योगेश्वर, योगेश्वर, Ishvara, ईश्वर, the Lord, the Lord, ईश्वर, ईश्वर, Te, Te, unto you, unto you, आपके ऊपर, आपके ऊपर, Bhaktum, Bhaktum, to narrate, to narrate, बताया, बताया, Bhavan, Bhavan, your good self, your good self, आप स्वयं, आप स्वयं, Naha, Naha, unto me, unto me, मुझ में, मुझ में, Arhati, arhati, deserve, deserve, लायक, लायक, Yat, yat, for, for, जिसका जिसका, he, he, reason of, reason of, कारण है, कारण है,
Vishnu, Vishnu, of Lord Vishnu, of Lord Vishnu, विष्णु का, Vishnu का, Vrityaha, Vrityaha, servants, सेवक, सेवक, Svabrityaha, Artha-krita, स्वभृत्य आकृता, for the interest of their servants, for the interest of their servants, अपने सेवक की भलाई के लिए, अपने सेवक की भलाई के लिए, Charanti, Charanti, do wander. do wonder, विचरण करते हैं. विचरण करते हैं. Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद का. Vidura said, विदुर ने कहा, O Uddhava, हे उद्धव, because the servants of Vishnu, the Lord, they wander in the interest of serving and helping others. विष्णु के सेवक अन्य लोगों की मदद जो आपने स्वयं भगवान से पाकर आप जागृत हुए हैं. Vidura said, O Uddhava, because the servants of the Lord, they wander in the interest of serving and helping others. It is quite fit that you're kindly describing your realization with which you have been enlightened by the Lord Himself. तो वो कह रहे हैं, हे उद्धव, ये भगवान विष्णु के सेवक पूरे विश्व में विचरण करते हैं सभी लोगों की मदद करने के लिए. तो आप ये बहुत सही एक व्यक्ति हैं जो अपने आत्म साक्षात्कार को लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं इसे भगवान से प्राप्त किया है. Purport by Srila Prabhupada. श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य. The servants of the Lord are actually the servants of society. भगवान के सेवक असल में समाज के सेवक होते हैं. They have no interest in human society other than to enlighten it in transcendental knowledge. उनका मनुष्य जगत के लिए और कोई उद्देश्य नहीं, केवल उनको कैसे दिव्य ज्ञान के प्रति जागृत किया जा सके. They are interested in imparting. और उस दिव्य संबंध में कैसे कर्म किए जाते हैं. And what is the ultimate goal of the human life? और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है. That is the real knowledge which can help the society achieve the real aim of human welfare. ये है असल लक्ष्य जो समाज को मदद कर सकता है मनुष्य के परोपकार के लिए. Knowledge in the matter of the bodily necessities of eating, sleeping, mating, and fearing तो जो ज्ञान जो केवल शरीर के जरूरतों, आहार, निद्रा और भय मैथुन के आधार पे है, transformed into various branches of advancement of material knowledge और जो अनेक रूप लेता है भौतिक विकास के रूप में, all that knowledge is temporary. ये सारा ज्ञान अनित्य होता है. The living being is not the material body but an eternal part and parcel of the Supreme Being. तो जीव ये शरीर नहीं है, वो भगवान का एक नित्य अंश है. And thus revival of his self-knowledge is essential. इसलिए आत्मविज्ञान को जागृत करना बहुत जरूरी है. Without this knowledge, the human life is baffled. इस ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन पूरा बेकार है. The servants of the Lord Vishnu are entrusted with this responsible work. विष्णु के सेवकों को के ऊपर ये जिम्मेदारी है ये प्रचार करने. And they wander all over the earth into all other planets in the universe. और वो अनेक ब्रह्मांडों में पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं. Thus, the knowledge which was received by Uddhava directly from the Lord, तो इसीलिए उद्धव ने जो ज्ञान प्राप्त किया सीधे सीधे भगवान से, it deserves to be distributed in the human society, इसे अवश्य मनुष्य के समाज में प्रचार करना चाहिए. especially to persons like Vidura, विशेष करके विदुर जैसे व्यक्तियों who को are highly advanced in the devotional service of the Lord. जो भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा उन्नत है. Real transcendental knowledge descends in the disciplic succession from the Lord to Uddhava. तो असल दिव्य ज्ञान परम भगवान से इस परंपरा के माध्यम से उद्धव के पास आया. And from Uddhava to Vidura and so on. और उद्धव से विदुर के पास और इस तरह से आगे बढ़ता है. Such supreme transcendental knowledge is not possible to achieve by the process of imperfect speculation, ऐसा परम ज्ञान प्राप्त कर पाना मनोधर्म के आधार पर संभव नहीं है. as performed by the so-called learned mundane wranglers. जैसे बड़े-बड़े भौतिक विद्वान करने का प्रयास करते हैं. Vidura was anxious to know from Uddhava that confidential knowledge known as Paramam Stitam. तो विदुर ये ज्ञान दिव्य ज्ञान रहस्यमय ज्ञान उद्धव से प्राप्त करना चाहते थे. In which the Lord is known by his transcendental pastimes. और जिसके माध्यम से परम भगवान को और उनके दिव्य लीलाओं को जाना जा सकता है. Although Vidura was older than Uddhava, और यद्यपि विदुर उद्धव से उम्र में बड़े थे,
he was anxious to become a servant of Uddhava in the transcendental relationship. और फिर भी वो उद्धव के सेवक बनना चाहते थे इस दिव्य संबंध में। This formula of transcendental disciplic succession is taught by Lord Chaitanya also. और ये दिव्य परंपरा का ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है। Lord Chaitanya advises that one receive transcendental knowledge. What is it? Lord Chaitanya advises that one receive transcendental knowledge from anyone, whether Brahmin, Shudra, householder, or sannyasi, provided कि उसे तत्व में तत्व विज्ञान उसके पास होना चाहिए। a person who knows factually the science of Krishna is such a bona fide spiritual master. जो तत्व में कृष्ण के विज्ञान को जानता है वो असल में आध्यात्मिक गुरु है। Om Jnana Tamaram Dasha Devancha Mashalaka Om Chakshamaratam Vadatasam Shri Guru Devancha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, translation. Vidura said, O Uddhava, because the servants of Vishnu, the Lord, they wander in the interest of serving and helping others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge or self-realization with which you have been enlightened by the Lord Himself. तो विदुरा उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, आप जो विष्णु के सेवक हैं, पूरे विश्व में विचरण करते हैं सारे मनुष्यों की भलाई के लिए, तो ये बहुत ही सही है कि आप भी अपने जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है परम भगवान से स्वयं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। So in order to help the suffering conditioned souls, then Krishna, he said, then I also come to personalities. और असुरों का नाश करने के लिए। As well as to re-establish religious principles, Krishna says, I come again and again. और कृष्ण बताते हैं धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए मैं बार-बार अवतार लेता हूँ। So Krishna himself, he comes and preaches Bhagavad Gita. तो कृष्ण स्वयं आते हैं और भगवद गीता का प्रचार करते हैं। And he speaks to Arjuna. और वो अर्जुन के माध्यम से बताते And हैं। through Arjuna to the rest of mankind, to all the other conditioned souls as well. और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जगत को सारे बद्ध जीवों को बताते हैं। Because he's speaking universal truth that's meant for every conditioned soul. क्योंकि वो वैश्विक सत्य बता रहे जो सभी जीवात्माओं के लिए बना है। So Krishna is the guru, acting as the guru. तो कृष्णा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। But he also instructing directly, relax. He's also instructing Uddhava. और साथ ही साथ में उद्धव को भी निर्देश दे रहे हैं। In the 11th canto Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में। So he's establishing that parampara from himself to Arjuna. तो वो स्वयं परंपरा को स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम And से। also he directly speaking and preaching directly to Uddhava. और वो सीधे-सीधे प्रचार भी कर रहे हैं जाके उद्धव को। So he's speaking one particular presentation in Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में एक विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं। You're not the body. आप ये शरीर You're नहीं है। suffering because you're material consciousness. Ultimately to go back home, back to Godhead. और अंततः भगवत धाम वापस जाएंगे। So this is a very particular emphasis or presentation. तो यहाँ बहुत विशेष प्रस्तुति या जोर एक बात पे दिया But जाता है। then Krishna is also preaching to Uddhava at the end of Srimad Bhagavatam. और कृष्णा उद्धव को भी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंत में। So those instructions are much higher, elevated topic of discussion. वो निर्देश बहुत ही ऊंचे स्तर के, बहुत ही उच्च स्तर की चर्चाएं हैं। So according to time, place, circumstance, and candidate, the Lord and the Lord's devotee are making a certain type of presentation. तो देश काल और पात्र के आधार पे भगवान और भगवान की प्रतिनिधि एक विशेष तरह की प्रस्तुति देते हैं। It's even saying that when Shankaracharya, is that right? When he came, when he manifested, he is preaching about the monism. तो यहाँ तक कि बताया जाता है जब शंकराचार्य ने भी अवतार लिया तो उन्होंने एकेश्वर अद्वैतवाद का प्रचार किया। So he was giving like secondary meaning of the Vedas. तो वेदों का दूसरा अर्थ वो लोगों को समझाया। Right?
because at that point everyone was basically atheists, क्योंकि उस समय में सभी लोग मूल रूप से नास्तिक हो because चुके they थे, came just after Buddha. क्योंकि वो बुद्ध के अवतार के तुरंत So बाद आए। Buddha was disregarding the Vedas, तो बुद्ध ने सारे वेदों को त्याग कर दिया and he was preaching this ahimsa, और non-violence. अहिंसा का प्रचार किया। So he was moving away from the Vedas because they're using the Vedas to kill the animals. तो वो उन्होंने वेदों से लोगों को दूर किया क्योंकि लोग वेद का इस्तेमाल पशु की हत्या करने So के for लिए a particular purpose, then the Lord incarnated as Lord Buddha, तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया, disregarding the Vedas वेदों को तिरस्कार करने के लिए, in order to stop this animal killing. ताकि पशु की हत्या बंद की जा सके। And he came again as Shankaracharya to re-establish the Vedas. और फिर वो वापस आए शंकराचार्य के रूप में वेदों को पुनः स्थापित करने। But by then everybody is atheistic. लेकिन तब तक सभी लोग नास्तिक बन चुके थे। So then he had to do a gradual type of preaching. Okay, just try to understand that there is some spirit, some God that is beyond. A little bit hiding what is the main meaning, the primary meaning. तो श्री प्रभु बताते हैं उन्होंने भक्तों ने भगवान के ये जो मुख्य चीजें थी उसको थोड़ा ढक कर बताने का प्रयास Different time Prabhupada said, I'm little cheating you. प्रभुपाद ने भी कई बार कहा कि अलग-अलग समय में मैंने आप लोगों को थोड़ा ठगा है। So Prabhupada is trying to build the house in which the whole world can live. प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया जहाँ पूरा विश्व आके रह सके। And when devotees ask Prabhupada in America, why you're always preaching about these impersonalists, Mayavadis? और किसी ने प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद आप हमेशा मायावादियों के खिलाफ क्यों प्रचार करते हैं? And Prabhupada said, that's you people. प्रभुपाद ने कहा तुम लोग मायावादी। You're the impersonalists, you're the Mayavadis, you are the atheists. तुम लोग हो नास्तिक लोग और तुम ही वो मायावादी भी हो। So he's making presentation, an apparent presentation to attract the masses. तो प्रभुपाद ऐसे अपार तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होकर भीतर आ He's सकें। saying, just come and dance and chant, take prasadam, go back to Godhead. बस आइए नाचिए कीर्तन कीजिए प्रसाद दीजिए भगवत नाम It चाहिए। seemed very simple, बहुत सरल लगा सबको सुनने में। right? Prabhupada said, if I told you really what is required, none of you would have came. और प्रभुपाद ने कहा अगर मैंने असल में बता दिया होता तुम में से कोई भी आता नहीं। So he had to make some trick. तो उनको थोड़ा छल करना पड़ा। So mostly he had to hide the absolute consideration in many ways. असल जो तत्व विचार को थोड़ा ढकना पड़ा उनको। Just like Krishna only spoke a certain thing to Arjuna. जैसे कृष्ण ने केवल कुछ ही चीजें अर्जुन को बताई। But later, to his more intimate devotee, he spoke higher topic in Srimad Bhagavatam. लेकिन बाद में अपने बहुत करीबी भक्तों के साथ श्रीमद् भागवतम उन्होंने बहुत सारे करीबी भीतरी So बातें of उनको course, बताई। the Lord and his pure devotee, very expert teacher, he's able to preach to the type of class that he has. लेकिन एक निपुण शिक्षक विशेष तरह के क्लास के लोगों को उसी तरह से सिखा पाते हैं। Pre-primary, primary, secondary, right? Different level, class. कि कोई प्राथमिक स्तर का शिष्य है या माध्यमिक का है या उच्च माध्यमिक का है उसके आधार पे वो बताते हैं। So you're adjusting the presentation according to time and place, circumstance, and the candidate. तो अपनी प्रस्तुति को थोड़ा व्यवस्थित करके देश, काल, समय, पात्र के आधार पे प्रस्तुत किया जाता है। So people misunderstand that Srila Prabhupada, oh, he's just giving ABCs. लोग कई बार गलत समझ बैठते हैं कि श्रील प्रभुपाद केवल ABC सिखा रहे हैं। They don't understand that who is he preaching to. तो वो समझ नहीं रहे थे किन लोगों को प्रचार किया जा रहा है वहाँ। But really, all of this information and knowledge should have set the platform, transcendental platform. लेकिन असल None में of it is ABCs. इसमें से जितना भी ज्ञान सारा दिव्य स्तर पे चतुर्थ आयाम का ज्ञान है इसमें से कुछ भी ABCD नहीं है। Only the candidate is on ABC platform. जो शिष्य हैं वो लोग ABCD के स्तर पे हैं इसीलिए। So the expertise of the preacher is that, and of course, Krishna is guiding his intelligence and his faith. और अवश्य जो प्रचारक है कृष्णा उसकी बुद्धि और उसकी श्रद्धा को मार्गदर्शन दे रहे हैं। Prabhupada said that Krishna told me every word what to write, what to say. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण ने मुझे एक-एक शब्द, एक-एक 25 बताई Because मुझे क्या लिखना है। Krishna knows what everybody can understand, what they need to understand. क्योंकि कृष्णा को पता है किसको क्या समझने की जरूरत है और कौन कितना समझ सकता है। So that's why Prabhupada said that my godbrothers, they don't know how to preach. और इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कहा मेरे गुरु भाइयों को पता ही नहीं है प्रचार कैसे किया जाता है।
You see, they have no intelligence for that. उनके पास कोई बुद्धि नहीं है प्रचार करने So that intelligence has to come from Krishna Parampara. तो वो बुद्धि कृष्णा और कृष्ण परंपरा से आती है And here it's talking about the disciplic और succession. यहाँ पे परंपरा की बातें बताई जा रही So हैं unless one is directly empowered with that type of spiritual understanding and intelligence, they'll not know how to properly preach. तो जब तक किसी को इस तरह का दिव्य बुद्धि और श्रद्धा या समझ प्राप्त नहीं होगी कृपा के How to present it in such a way that they'll be able to understand it and try to assimilate it. तो आचार्य को पता है कि समय और शिष्य और उनकी क्या योग्यता है क्षमता है समझ पाने की उसके आधार पे उन्हीं चीजों को वो प्रस्तुत करते हैं When Srila Prabhupada sent Srila Gogovinda Swami to Orissa, he said, you translate all of my books into Oriya. तो जब श्री प्रभुपाद ने श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज को उड़ीसा में भेजा और उन्होंने कहा कि मेरे सारी किताबों को उड़िया भाषा में अनुवाद कीजिए And my Gurudev told Prabhupada, but there's not really exact word for word translation. और मेरे गुरुदेव ने प्रभुपाद को बताया कि हर एक शब्द का बिल्कुल वैसा ही मतलब उड़िया में मौजूद नहीं है You're going from Sanskrit into English, now English you have to go into Oriya. So Gurudev is saying it's not really easy to put it in that way. तो गुरुदेव ने बताया कि पहले संस्कृत से इंग्लिश में किया गया फिर इंग्लिश से उसको उड़िया करना है तो बिल्कुल वैसा ही सटीक शब्द उड़िया में ढूंढ पाना बहुत ही And मुश्किल है Srila Prabhupada said, you know the meaning of it, you just put it in a way that they can understand it. प्रभुपाद ने कहा आपको सबका अर्थ पता है उन लोगों को ऐसी भाषा में प्रस्तुत कीजिए कि वो लोग भी समझ पाए So this is not, just some academic, scholarly type of approach. तो ये कोई बड़ा विद्वान बन के ऐसा करने की जरूरत नहीं One has to realize the knowledge किसी को ये ज्ञान का by the साक्षात्कार प्राप्त mercy करना of चाहिए Krishna and Krishna Parampara. कृष्णा और कृष्ण परंपरा की कृपा के प्राप्त करके Then they'll be able to be nice speaker. तब वो अच्छे प्रवक्ता बन सकता है So Prabhupada says if you're expert at hearing and you hear perfect knowledge from perfect source, then you'll be expert in your speaking. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप बहुत निपुण है श्रवण करने में और आप अगर पूर्ण ज्ञान पूर्ण जगह से सुन रहे हैं तो आप बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट निपुण होंगे So a person who actually knows and realizes this philosophy by the mercy of his spiritual master and Krishna Parampara, only they can become bona fide spiritual master. तो जिस व्यक्ति ने कृष्ण परंपरा गुरु के माध्यम से और कृपा के माध्यम से इस ज्ञान का साक्षात्कार किया है केवल वही इस ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं What did Prabhupada say? So here, when Vidura was inquiring, जब विदुर प्रश्न कर रहे हैं उद्धव ने किया so they're very fortunate because they're directly hearing from the Lord. क्योंकि वो इसका मतलब वो बहुत भाग्यवान है क्योंकि उन्होंने सीधे भगवान से सुना If we're not that fortunate, अगर हम उतने भाग्यवान नहीं हैं then we have to hear from that person who heard from the Lord. तो हमें उन व्यक्ति से सुनना होगा जिन्होंने भगवान से So सुना Krishna only speaks, Prabhupada explains, he only speaks through his parampara. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण अपने केवल परंपरा के माध्यम से बात करते This हैं is mystery of parampara. ये है परंपरा का रहस्य Everybody telling their parampara. सभी लोग कह रहे हैं कि वो परंपरा है One time I asked Srila Gogovinda Swami, is the disciple of the spiritual master, is he automatically parampara? एक बार मैंने श्री गौर गोविंद हमारे से सवाल पूछा कि कोई गुरु का शिष्य क्या वो भी अपने आप ही परंपरा बन जाता है I had this question. मेरे मन में ये सवाल Because था। everybody is saying, I'm disciple of Prabhupada and I'm also parampara. क्योंकि सभी लोग कह देते हैं कि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ मैं भी परंपरा So I said, is it enough to just be the disciple of that spiritual master to make you parampara? तो मैंने सवाल पूछा कि क्या ये बस गुरु का शिष्य बन जाना ही पर्याप्त हो जाता है कि मैं परंपरा And बन गया Srila Gogovinda Swami, he just shook his head. He said, Nitya Siddha Baba. श्री गौर गोविंद साहब ने अपना सर हिलाया और कहा नित्य सिद्ध केवल Nitya Siddha. नित्य सिद्ध केवल बन सकते हैं So that's parampara from the absolute consideration. तो वो है परंपरा तत्व विचार दृष्टिकोण से So unless Krishna and Nitya Siddha manifesting, nobody can be parampara. तो जब तक कृष्णा या नित्य सिद्ध प्रकट नहीं होते हैं कोई भी परंपरा नहीं बन सकता Because really Krishna takes over, the Nitya Siddha takes over the body of the Guru.
क्योंकि वो नित्य सिद्ध गुरु के शरीर को पूरी तरीके से That's what ग्रहण Sakshat करते हैं। Ritvena Samasta Shastra means. तो ये है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र का Is the अर्थ। embodiment, right, of Krishna's mercy. तो वो कृष्णा कृपा की मूर्ति है। So unless one is empowered, brothers, unless one's empowered by Mahaprabhu, he cannot be bona fide spiritual master. He cannot be a real preacher. तो हम बताते हैं अगर किसी को महाप्रभु के द्वारा सशक्तिकरण नहीं मिला हो तो कोई भी प्रामाणिक गुरु या प्रचारक नहीं बन सकता। So this is parampara from an absolute consideration. तो ये है परंपरा तत्व विचार दृष्टिकोण से। Then that makes sense how Prabhupada says the bona fide guru is pure via medium of Krishna. तब ये बात का सही अर्थ बनता है कि हाँ प्रामाणिक गुरु कृष्ण के शुद्ध माध्यम है। So unless one is hearing from Krishna through pure via medium, nobody can hear from Krishna. जब तक कोई कृष्ण को उनके शुद्ध माध्यम से नहीं सुन रहा है तो कोई भी कृष्ण को Because उसके अलावा सुन Krishna नहीं सकता। will only manifest either directly, like in the case of Uddhava or Arjuna, या तो कृष्ण सीधे सीधे जैसे अर्जुन या उद्धव के सामने प्रकट होकर उनसे बात किया, or Prabhupada says, or through his bona fide representative in disciplic succession, Parampara. या फिर उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि परंपरा के माध्यम से वो प्रकट होते हैं बोलते हैं। So you must understand the tattva of Parampara. तो आपको परंपरा के तत्व को समझना You होगा। must understand really what is Guru Tattva. आपको समझना होगा असल में गुरु तत्व क्या है। Otherwise, Prabhupada said, self-made guru cannot be a guru. और प्रभुपाद ने कहा है, स्वयं निर्मित गुरु गुरु नहीं होता। You cannot get your friends and put a stamp and put on the uniform and say, okay, now I'm pure via medium of Krishna. अपने दोस्तों को जमा करके और एक स्टैम्प कहीं से बनवा के गुरु के कपड़े लगा के कहेंगे मैं गुरु बन गया, कृष्णा का मैं प्रतिनिधि I'm बन going गया। to go to that class and be a... परंपरा का प्रतिनिधि कौन होगा? And Srila Prabhupada said that Krishna will say. प्रभुपाद ने कहा कृष्णा बताए। So Krishna himself determines who he wants to speak to. तो कृष्णा स्वयं निर्धारित करते हैं वो किसके माध्यम से बात करना चाहते हैं। And bona fide guru in parampara, he knows Krishna's preference. और प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में वो जानते हैं कि कृष्णा ने किनको चुना है He परंपरा knows who Krishna wants to use. में। क्या उद्देश्य है? So if we do not hear from such personality, then how you can hear Krishna? How will you hear Krishna? अगर आप ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो आप कृष्णा को कैसे सुन पाएंगे? It's not possible. ये संभव नहीं है। And without that hearing from Tattvavid Guru, you cannot know Tattva, you cannot know, you cannot know the absolute truth. तो ऐसे तत्वविद गुरु से श्रवण नहीं करने पे आप तत्व परम सत्य You नहीं can जान have सकते। theoretical, academic, scholarly type of understanding, आपका मौखिक कोई शैक्षणिक समझ होगा, but you cannot have access. लेकिन आपको असल में कोई प्रवेश नहीं मिल रहा है। You see, Krishna is on Shuddha Sattva platform, transcendental platform. कृष्णा शुद्ध सत्व दिव्य स्तर पे है। If we do not hear from Krishna that Shabda Brahma directly, like Uddhava or Arjuna, or through pure via medium of the spiritual master, we have no ability to understand or to reach to that platform. तो अगर हम कृष्णा को सप्त ब्रह्म के माध्यम से या तो सीधे सीधे जैसे कृष्णा ने अर्जुन को सुनाया या उद्धव को या फिर कृष्णा के प्रतिनिधि के माध्यम से श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम खुद भी उस दिव्य स्तर पे नहीं उठ सकते। So that's why Srila Prabhupada says, unless you're completely sincere and serious to want to understand Krishna, surrender to Krishna, you'll not get such a spiritual master. इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं अगर आप बहुत गंभीर है, एकनिष्ठ नहीं है कृष्ण को शरणागत करने के लिए, सेवा करने के लिए, तब तक आपको ऐसे प्रमाणिक गुरु नहीं मिलेंगे। So that's why Prabhupada said hardly anybody is serious to go back home back to God. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा मुश्किल से ही किसी को रुचि है भगवत धाम वापस जाने। So therefore there's more of an apparent presentation तो इसीलिए ज्यादा अपार विचार की प्रस्तुति because देने की the जरूरत है। masses of the people are not that serious yet, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं अभी तक गंभीर नहीं हुए हैं। and therefore there has to be more apar vichar gurus इसीलिए ज्यादा अपार विचार गुरुओं की who are जरूरत है understanding and pushing an apar vichar presentation, जो ज्यादा अपार विचार प्रस्तुति को जोड़ देते हैं, आगे बढ़ावा देते हैं। because they still need to, how do you say, learn certain lessons, क्योंकि अभी भी उनको कुछ शिक्षाएं जीवन में पाठ सीखना है, because they're not so serious. क्योंकि अभी भी गंभीर नहीं हो पाए। So unless one is really sincere and serious to want to surrender to Krishna, only they will get the bona fide guru sent by Krishna.
जो असल में गंभीर है, एकनिष्ठ है, कृष्ण को शरणागत करने के लिए केवल उनको ही प्रमाणिक गुरु मिलेगा। So when someone is accepted in Krishna Parampara, तो अगर किसी को कृष्ण Mahaprabhu's परंपरा, Parampara, महाप्रभु की परंपरा में स्वीकार then किया you जाता can है, understand, oh, they got that special mercy from Krishna. तब आप समझ सकते हैं कि इनको ये विशेष कृपा कृष्ण परंपरा से मिली। And if that personality who's authorized, bona fide in that parampara accepts you, और वो व्यक्ति जो उस परंपरा में प्रमाणिक है, and अधिकारी you है, agree to follow his instructions, वो आपको स्वीकार करते हैं, आप उनके निर्देश को पालन करने के लिए तैयार हैं, then this sambandha gyan, this relationship is established with Krishna. तब ये संबंध ज्ञान कृष्ण के साथ स्थापित हो सकता है। Then as one goes on following the instructions, one is engaging in that pure devotional service. और जब वो इस तरह के निर्देशों को पालन करने में लगता है, यानी कि वो भक्ति में सेवा में Process लगने of का, trying to purify and qualify ourselves. अपने आप को शुद्ध बनाने का और योग्य बनाने का प्रयास कर रहा है। Krishna says, otherwise, if you have too much big false ego, you cannot hear me. वरना कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मिथ्या अहंकार अगर बहुत बड़ा है तो मुझे सुन नहीं पाओगे। So because we cannot hear Krishna, then Krishna is coming as Guru. तो कृष्ण को हम सीधे सीधे सुन नहीं सकते हैं, तो So कृष्ण Chaitya Guru manifesting as a Guru. चैत्य गुरु के रूप में आते हैं, बाहर प्रकट होते हैं। Now Prabhupada said that one must be ordered and authorized by previous acharya to take that responsibility. प्रभुपाद बता रहे हैं किसी को पूर्व आचार्य के द्वारा आदेश अधिकार प्राप्त करना होगा वो उत्तरदायित्व निभाने के लिए। And of course people say, well, I'm disciple of the previous acharya Hello. and I was also ordered and authorized. तो कोई लोग कह देते हैं कि हाँ मैं उस प्रमाणिक गुरु का मैं शिष्य हूँ तो मुझे भी आदेश अधिकार मिल गया है। Because they know you can't just become self-made guru, so you have to say you're ordered and authorized somehow, right? क्योंकि उनको पता है कि स्वयं से गुरु कोई नहीं बन सकता है, तो वो कह देते हैं कि मुझे भी आदेश और अधिकार मिला है। So then you can analyze, well, you know, what is the authorization process? तो अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे काम And करती है how and when did you receive this type of order? और कैसे और कब आपको ये आदेश और अधिकार मिला। And most times they say, well, Mahaprabhu said, you know, whoever you meet, tell them about Krishna, become a guru. ज्यादातर लोग ऐसे लोग सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं महाप्रभु ने कहा है जिनसे भी मिलो उनको कृष्णा के बारे में बताओ और आप गुरु बन And जाओ। of course, Prabhupada said, I want all my disciples to और become. ये भी कहते हैं प्रभुपाद ने कहा है मेरे सारे शिष्य को मैं चाहता हूँ गुरु बने। But little thing, first of all, become qualified. लेकिन एक छोटी चीज कि पहले Become योग्यवान बनिए, qualified, become authorized. पहले योग्यवान बनिए और फिर अधिकार प्राप्त कीजिए। So if one cannot recognize the parampara, तो अगर कोई परंपरा को पहचान नहीं पा रहा है, right, they're not recognized Srila Prabhupada as Mahaprabhu's parampara. तो महाप्रभु की परंपरा में श्रील प्रभुपाद है उनको पहचान नहीं पाए And they were outraged that Prabhupada was saying, my name is Prabhupada. और उनको गुस्सा भी आता था कि प्रभुपाद जो है अपना नाम प्रभुपाद बताते हैं Because that's what his guru, कि हमारे आध्यात्मिक गुरु का नाम उन्होंने ले लिया। who are you? अब है कौन? So they just took it and they couldn't recognize Srila Prabhupada. लेकिन वो श्रील प्रभुपाद को पहचान नहीं पाए। Prabhupada said, yes, they're just thinking I'm a rotten grihasta. प्रभुपाद कहते थे वो सोचते थे मैं सड़ा हुआ गृहस्थ हूँ, So they're just looking from external point of view. तो केवल अपने बाहर से देखते Right, हैं। it says here, Prabhupada was saying in the purport, प्रभुपाद का तात्पर्य में बता रहे हैं। where was it? He's telling how it doesn't matter if you're a sannyasi, whether you're grihasta, whether you're shudra, whether you're brahmana. यहाँ बता रहे तात्पर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण है, शूद्र है, सन्यासी है, गृहस्थ है, Who gets mercy from Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotee, जिससे भी महाप्रभु के भक्त की कृपा मिलती है, they can understand this tattva. वो ये तत्व समझ पाएंगे, They can also become bona fide spiritual master. वो भी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। Prabhupada says this formula of transcendental disciplic succession, that is also taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Shudra, householder, or sannyasi, ब्राह्मण, गृहस्थ, सन्यासी, शूद्र, provided that person is factually conversant with the science of Krishna. एक ही शर्त है कि वो तत्व विज्ञान हो उसके पास और कृष्ण के विज्ञान का उसे प्राप्त होगा। So let's analyze that statement. तो चलिए इस वाक्य का और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। It's telling, well, Mahaprabhu said you should listen to me even if I'm a shudra and even if I'm a householder. तो महाप्रभु कह रहे हैं आपको मुझे सुनने की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गृहस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, शूद्र हूँ, ब्राह्मण हूँ।
because I have this transcendental knowledge कि about मेरे Krishna पास- consciousness. मेरे पास- Conversant mean. तो ये तत्व विज्ञान का मतलब क्या That होगा? means you know how to talk about the Krishna conscious philosophy process. क्या इसका मतलब कैसे कृष्ण भावना की प्रक्रिया काम करती है इसके बारे में समझा पाना? You can quote some shloka. या कुछ श्लोक बोल देते हैं? It means that you have fully realized it by the mercy of Guru Krishna. इसका मतलब आपने पूरा साक्षात्कार प्राप्त कर लिया उन सभी चीजों का गुरु और And कृष्ण के because पास। your intelligence in faith is fully realized by that mercy, you can easily just explain it automatically. क्योंकि और वो बुद्धि वो श्रद्धा It's not a performance. तो ये किसी तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। Right? We went to the temple today. आज The हम person मंदिर गए। is speaking there. एक व्यक्ति वहाँ बोल रहे थे, He's feeling himself very comfortable. वो थे सोच रहे थे बहुत सुविधाजनक He's looking स्थिति है। very conversant. और देखने में ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे से बात कर रहा है। Yeah, talking very comfortably, sitting on Vyasasan, Vyasasan talking बहुत about अच्छे से आराम so से। much knowledge, Gyan. He's feeling very interested in what he's doing, what he's saying. वो बहुत आराम से बैठा व्यासासन में ऐसे बता रहा है जैसे सब जानता है, सब कुछ उसको अच्छे से He's पता got है। some knowledge, he has some speaking ability, उसके पास कुछ ज्ञान है, कुछ बोलने की शक्ति है he अच्छी, has some charisma, उसके अंदर कुछ जादू भी है थोड़ा, he's thinking he's controlling the crowd nicely. और वो सोच रहा है कि मैं भीड़ को बहुत अच्छे से चला रहा हूँ अपने हिसाब से। So he's feeling very comfortable. तो उसे बहुत सुविधाजनक लग रहा था। He's looking very conversant with the topic. ऐसा लग रहा था जो विषय के बारे में बात कर रहा है उसे बहुत अच्छा ज्ञान है उसका। But if he doesn't surrender to Tattvavid Guru, लेकिन अगर वो तत्वविद गुरु को शरणागत ही he नहीं किया does उसने, not hear in the parampara, और अगर उसने परंपरा में श्रवण ही नहीं किया है, means he cannot hear Krishna. इसका मतलब वो कृष्ण को सुन नहीं सकता। And without Krishna parampara, without that mercy, you have no access to that understanding. तो कृष्ण परंपरा की कृपा के बिना आपके पास कोई प्रवेश नहीं है उस दिव्य स्तर में पहुंचने। So all you're left with is some kind of gyan and some theoretical, philosophical, discussion. तो आपके पास केवल यही बाकी है, किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह का मौखिक समझ लोगों के सामने प्रस्तुत करो। It's not factually cumbersome, ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। right? You say, well, I'm very conversant, so factually I'm being conversant. No, factually means you know the facts. तो कहते हैं कोई हाँ मैं तत्व में पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ उसको प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं आपको पहले तत्व का पता होना चाहिए, तत्व क्या होता है। Not that you're confident in your communication. बस ये नहीं कि आप बातचीत करने में बहुत That's ज़्यादा not आपका factual. आत्मविश्वास है, Cumbersome. ये तत्व विज्ञान नहीं है। Factual means you understand Guru Sadhu Shastra. You have unflinching faith in Guru Sadhu Shastra. तत्व का मतलब है आपको पूरे समझ है गुरु साधु शास्त्र का, और गुरु साधु शास्त्र के प्रति आपके And पूरी श्रद्धा without है। hearing from someone who has that unflinching faith, how will you develop that type of unflinching faith in Guru Sadhu Shastra? बिना किसी ऐसे व्यक्ति के श्रवण की जिसके पास खुद ऐसी अटूट श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र में, आपको कैसे ये श्रद्धा It's मिलेगी? not possible. ये संभव नहीं है। So all the benefits that Krishna can give anyone is only through his disciplic succession. तो कोई भी लाभ कृष्ण की कृपा की किसी को भी मिल सकती है केवल So परंपरा के माध्यम से। who can realize that disciplic succession? This is very rare personality actually. तो कौन उस परंपरा को देख पाता है? ये बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। Right? Hardly anybody recognized Srila Prabhupada. लेकिन मुश्किल से कोई श्रील प्रभुपाद को पहचान पाएगा। They refused to call Prabhupada Prabhupada. उन्होंने प्रभुपाद को प्रभुपाद बोलने से मना कर दिया। They call him Swamiji. वो कहते स्वामी जी, Okay, he's our godbrother. He's preaching. वो हमारे गुरु भाई है, प्रचार कर He रहे has some preaching ability to the Westerners. हैं। विदेशी लोगों को प्रचार करना उनको आता है। They're not saying he is Nitya Siddha, manifestation of Nitya Siddha. वो ये नहीं देख पा रहे हैं, ये नित्य सिपाही है ना, श्रद्धा मिल पाई है सीधे सीधे Therefore, भगवान से। they cannot recognize Krishna in the form of the spiritual master. तो इसीलिए वो लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाए जो इस गुरु के रूप में आए। That means you didn't get mercy from Krishna or from that sadhu, यानी कि ना तो आपको कृष्ण से कृपा मिली, ना उस साधु से कृपा। and therefore you're blind. You're deaf, dumb, and blind from that transcendental Shuddha Sattva platform. और इसलिए आप अंधे गूंगे बहरे हैं उस दिव्य स्तर से, शुद्ध सत्व स्तर से। So if Prabhupada established that his parampara from Mahaprabhu's line, तो अगर प्रभुपाद ने स्थापित किया कि वो परंपरा है, इस महाप्रभु की परंपरा, now how many people can understand that and accept that? कितने लोगों ने उसको स्वीकार किया और समझा भी? And you can't just say, oh, he's very nice Vaishnava. No, if you understand he's directly Krishna manifesting through parampara, then you should go and surrender to that person. अब ये बस नहीं कह सकते हाँ वो बहुत अच्छे वैष्णव, अगर आप समझ पा रहे हैं वो सीधे सीधे कृष्ण परंपरा के प्रतिनिधि हैं, तो आपको जाके उनको शरणागत करना चाहिए। Right? Even here,
Vidura was much older than Uddhava. यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है विदुर उद्धव से बहुत उम्र But में बड़े still he थे, understood Krishna directly manifesting and speaking through directly to Uddhava. लेकिन फिर भी वो समझ पाए कृष्णा सीधे सीधे यहाँ उद्धव के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। So it's my duty to surrender and inquire from him and hear from him. तो ये मेरा दायित्व है, मैं उनको जाके शरणागत करूं, उनसे श्रवण करूं और उनसे प्रश्न करूं। Just like Shukadeva Goswami, he was wandering, he looked like a madman. जैसे सुखदेव गोस्वामी घूम रहे थे और देखने में पागल आदमी लग Not रहे थे, dressed properly, not looking properly. ना ढंग से कुछ कपड़े पहने हैं, He's ना only कुछ a देखने में अच्छे लग रहे हैं। 16-year-old boy. 16 साल का एक लड़का है। You cannot just understand who is he by some external analysis. आप किसी को ऐसा समझ नहीं सकते बाहर से उसके रूह हाव भाव देखकर। It's when they start speaking, जब वो बोलना शुरू करता है, right? And then you understand, oh, where did he get this information from? तब आप समझेंगे इसको ये ज्ञान मिला कहाँ से? How is he so factually competent with this information? कैसे इनको ये तत्व विज्ञान प्रस्तुत कर पा रहे हैं? That आपके means he विश्वास से। got this special mercy to understand it. यानी कि उनको विशेष कृपा मिली इसको समझ पाने के लिए। And those words are not theoretical, it's practically factually realized और वो शब्द सैद्धांतिक थे, by तत्व the विज्ञान mercy of Guru Krishna. गुरु और कृष्ण की कृपा के माध्यम से। That is who we should hear from. उनसे हमें सुनना चाहिए। So Vidura, he understood, oh, Uddhava, he directly heard from the Lord. तो विदुर समझ पाए कि उद्धव ने सीधे सीधे भगवान से सुना And he's just wandering here on behalf of the Lord. और यहाँ वो आ रहे हैं भगवान की तरफ से And the Lord is using him, empowering him. और भगवान उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं। So he took humble position and said, please let me know, what did you hear from the Lord? और उन्होंने अपना विनम्र भाव स्वीकार, विनम्र स्थान ग्रहण किया और उन्होंने कहा भगवान What did क्या बताना you hear चाहते हैं? from Krishna Parampara? आपने कृष्ण परंपरा से क्या श्रवण किया है? Any questions so far? किसी का कोई प्रश्न है? Yeah. Oh, one last thing. एक आखिरी चीज, Prabhupada says, this is to help you in your question. आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा इसमें। Real transcendental knowledge descends in the disciplic succession. असल दिव्य ज्ञान परंपरा के माध्यम से अवतरित होता है। So real transcendental, तो कैसे आप समझ पाएंगे कि आपको असल आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है या नहीं? because externally it can appear to be Guru Sadhu Shastra. क्योंकि बाहर से सब गुरु साधु शास्त्र देखने में So लग if you're सकता just assuming, okay, he's Parampara, he's disciplic succession, so the knowledge he's given me, it's automatically real transcendental knowledge. है। तो बस आप मान रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है परंपरा है और जो ये बता रहे हैं ये सब गुरु साधु शास्त्र है, अपने आप ये दिव्य ज्ञान है, इसका मतलब मुझे दिव्य ज्ञान मिल You'll रहा है। make this assumption. आप बस ये मान कर चल रहे हैं। Prabhupada said such supreme transcendental knowledge, that means from Shuddha Sattva platform, transcendental platform. भगवान बता रहे हैं वो परम ज्ञान शुद्ध सत्व दिव्य स्तर से आता है। That knowledge is not possible to achieve or understand by the process of imperfect speculation. भगवान बता रहे हैं उस ज्ञान को तक पहुंच पाना अपूर्ण मनोधर्म के माध्यम से संभव नहीं है। So if you try to scholarly or intellectually approach and read the Vedas and imperfectly try to speculate and understand it, you do not have access to that actual transcendental knowledge. तो अगर आप प्रयास करें अपनी शैक्षणिक क्षमता, अपनी विद्वता लगा के वेदों का अध्ययन करके शास्त्र को पढ़ के अपने ही अपूर्ण मनोधर्म का इस्तेमाल करके आपको शास्त्र के अंदर कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। Such supreme transcendental knowledge is not possible to achieve by this imperfect speculative process. ऐसा परम ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है ये अपूर्ण मनोधर्म के तरीके से। As performed by the so-called learned mundane wranglers. जैसे ये नाम मात्र के भौतिक विद्वान करने का प्रयास करते So-called हैं। learned. When spiritual master disappears physically, and the disciple has been accepted by spiritual master in parampara, but the disciple after the disappearance of his spiritual master, he is not able to recognize the next acharya. So will he be considered that he is accepted in parampara if he is not able to recognize the next acharya? So will he be? That means he didn't recognize the previous acharya. तो प्रभु का सवाल है कि अगर कोई शिष्य ने प्रमाणिक गुरु को स्वीकार किया हो लेकिन प्रमाणिक गुरु का शरीर त्याग करने के बाद अगले आचार्य कौन है वो उनको पहचान नहीं पाए,
तो क्या होगा कि उसको त्याग कर दिया गया पर क्या परंपरा से। तो गुरुदेव बता रहे इसका मतलब उसने पहले आचार्य को भी समझा नहीं था परंपरा में है या नहीं। Yeah, ऐसा there's a problem. ये समस्या है। It means you didn't get mercy from Krishna, you didn't get mercy from that Sadhu Guru Vaishnava to truly understand, who is that personality इसका मतलब आपको and कृष्णा how is he bona fide authorized. यानी कि आपको कृष्णा से और उस साधु से भी कृपा नहीं मिली ये समझ पाने के लिए कैसे व्यक्ति प्रामाणिक है, आधिकारिक है, कृष्ण परंपरा के व्यक्ति। They may give you some chance and some opportunity to try to qualify yourself. तो हो सकता है वो आपको कुछ मौका देंगे कि आप अपने आप को धीरे-धीरे योग्यता प्राप्त कर सकें। Because they have this idea that they want to expand the preaching mission. क्योंकि उनका ये विचार है कैसे अपने प्रचार को सभी जगह फैला सकते हैं। So you want to give everyone a chance. तो वो सभी को मौका देना चाहते हैं। And hope that gradually people become purified and qualified and become intelligent and understand and try to be more eager and greedy to advance themselves. और ये आशा करते हुए कि जब इनको थोड़ा मौका दिया जाएगा तो थोड़ी धीरे-धीरे बुद्धि आएगी, थोड़ा ज़्यादा शुद्ध होंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, तब बाद में जब भक्ति जीवन में और उन्नत करना चाहें तो चीज़ों को और गंभीरता से समझने का Just प्रयास like the करें। father has so many sons, right? He wants them all to become qualified. जैसे पिता के पास बहुत सारे संतान हैं तो वो चाहेंगे मेरे सारे बच्चे अपने आप को योग्यवान बनाएं। Giving them all chance opportunity. तो सभी को मौका देते हैं आगे बढ़ने के। But who will take advantage of it? That's another story. लेकिन कौन उस मौके का लाभ उठाएगा ये सबके लिए अपनी अपनी बात है। My Gurudev said, although so many people apparently they're listening to me, तो मेरे गुरुदेव बताते थे बाहर से देखने में लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं, they're not really able to understand me असल में वो मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं because their mind is stolen by illusion. They're in bodily concept of life क्योंकि उनका मन को मोह ने चुरा लिया है और शरीर की चिंताधारा में व्यस्त है। because they're too much attached to bodily relations. क्योंकि शरीर और शरीर के सारे संबंधों से बहुत ज्यादा आसक्त है। Therefore, purified of that, and you're crying, begging for mercy. That's not possible. तो अगर आप उस तरह में फंसे हुए हैं लेकिन आप उसमें फंसे नहीं रहना चाहते हैं और आप कृपा के लिए भीख मांग रहे हैं कैसे आप अपने को योग्य बना सके, तब आपको वहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। That means they don't understand Guru Tattva. इसका मतलब उन्होंने गुरु तत्व नहीं समझा। So then why are they trying to be Guru? फिर वो गुरु बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? If you don't understand Guru Tattva, why are you trying to be a Guru? अगर आप गुरु तत्व नहीं समझते हैं तो आप गुरु बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? Shouldn't you know the Tattva? क्या भाई आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होना चाहिए? That's pretty simple, clear presentation, right? बहुत ही सरल और साफ प्रस्तुति है। Any other question? कोई प्रश्न किसी का? Sanathan? See, no, people they just say, my guru's parampara, I'm also parampara, right? लोग कहते हैं कि हाँ मैं भी परंपरा में हूँ, मेरे गुरु भी परंपरा में हैं। And because I'm giving you transcendental knowledge, और क्योंकि मैं आपको दिव्य ज्ञान I'm दे रहा also हूँ, acting as your guru. तो मैं भी आपका गुरु बना हुआ हूँ। So we're assuming a lot without understanding the science of it, then you'll definitely be misguided. तो इस विज्ञान को समझे बिना हम जरूरत से ज्यादा चीजों को बस मान कर चल रहे हैं तो आप सही तरीके से समझे ही नहीं है। You working? Hare Krishna, Shri Gurudev. I will. So, am I understanding correctly what you're saying that Probably not. वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैंने आपको बिल्कुल सही समझा? तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने कुछ सही से नहीं समझा। that when it is being said that one is accepted in parampara, that means at least one is on already purified and already reached a platform. If you can't hear Krishna manifesting to pure by your medium, what's it required to hear Krishna manifesting through pure by your medium? What platform do you call that? प्रभु का सवाल है कि अगर किसी को परंपरा में स्वीकार किया गया इसका मतलब उन्होंने वो पहले अपने आप को शुद्ध बना चुके हैं और वो निष्ठा के स्तर पे आ चुके हैं। तो गुरुदेव ने कहा कौन सी योग्यता की आपको जरूरत है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे सीधे सीधे कृष्णा इनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, आप सीधे सीधे कृष्णा को सुन पा रहे हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। That's why Prabhupada said that if you don't know and have relationship with Paramatma, Chetu Guru,
इसलिए श्री प्रभुपाद बताते हैं अगर आपका परमात्मा चैत्य गुरु के साथ कोई संबंध नहीं है and you cannot hear from him, और अगर आप उनसे सुन नहीं पा रहे हैं, Prabhupada said you cannot be a bona fide spiritual master. प्रभुपाद कहते हैं आप एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते हैं। So who will tell you? Everyone will say, oh yes, I'm hearing from Krishna, I'm hearing from Paramatma, Chaitanya Guru. तो कौन आपको बताएगा? सभी लोग कह रहे हैं मैं चैत्य गुरु परमात्मा को बात सुन रहा हूँ। How will you know whether they're telling the truth or not? कैसे आपको पता चला कि वो सच बता रहे हैं झूठ? Who will tell you? कौन आपको बताएगा? Only Krishna. केवल कृष्ण आपको बताएंगे। So everything okay, sounds nice, sounds perfect. ठीक है, सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, I'm बहुत पूर्ण getting लग some रहा है, nice effect. मुझे कुछ अच्छा प्रभाव भी दिख रहा है, But now I need to definitely know. लेकिन अब मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से जानना है। Then Prabhupada said that you have to completely depend on Krishna. प्रभुपाद कहते हैं तब आपको पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित होना And होगा understand that only Krishna can give you that intelligence and faith. और ये समझना होगा केवल कृष्ण ही आपको वो बुद्धि और It's not श्रद्धा दे that पाएंगे। that so-called guru is saying, I'm giving you intelligence and faith to believe in me and what I am. ऐसा नहीं कि कोई गुरु नाम मात्र गुरु कहेगा मैं आपको ये बुद्धि दे रहा हूँ श्रद्धा दे रहा हूँ आप मुझ में विश्वास कीजिए I'm going to force you to accept it. मैं आपको मजबूर करूंगा मेरी बात स्वीकार करने। No, that comes from Krishna. वो कृष्ण करेगा, Krishna will give you intelligence and faith. कृष्ण आपको बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे। But if we don't have sufficient faith and dependence on Krishna, लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त श्रद्धा या कृष्ण के ऊपर हम पर्याप्त निर्भर नहीं हो रहे हैं, then where will you get your intelligence and faith to accept the Guru? तो कहाँ से आपको वो बुद्धि और श्रद्धा मिलेगी गुरु को स्वीकार करने के लिए? Krishna picks your Guru. कृष्ण आपके लिए गुरु चुनते हैं, It's not that we're picking the Guru. ऐसा नहीं कि आप गुरु चुनते हैं। Now it's just a question of do you want Krishna to give you a Guru from Maya or from himself? अब बस सवाल ये है कि आप चाहते हैं कृष्ण आपके लिए माया के गुरु दें या अपना खुद का गुरु दें? Then it's what kind of Guru do you want? Do you want Guru sent by Krishna or Guru sent by Maya? तब आपको चुनना है कि आप किस तरह का गुरु चाहते हैं, जो कृष्ण माया के द्वारा भेजेंगे या कृष्ण अपने खुद के गुरु को भेजेंगे। And the majority of people, they're not at all और serious. ज्यादातर लोग गंभीर नहीं, So they just accept some, cheap Guru, तो कोई सस्ता गुरु जाके ढूंढ लेते हैं, like fashion statement. जैसे कोई फैशन दिखाना है, I am Guru. मेरे पास गुरु है। Does that make sense? आप समझ पाए? So who can understand it, तो कौन इसको समझ पाएगा? right? How did Sanjay said that he heard directly from Krishna. कैसे संजय ने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे कृष्ण से सुना? So how do you know that? तो कैसे आपको कैसे Just पता चलेगा? because he's telling? क्योंकि वो बस बोल दे रहे हैं इसीलिए? No, because of the potency of the message. क्योंकि उनके बातों में संदेश में जो शक्ति है, Because Krishna directly will manifest it. क्योंकि कृष्ण सीधे सीधे उनके कथा में प्रकट हो रहे हैं। So if Krishna does not directly manifest there, and there's no effect of Krishna's association, अगर then कृष्ण how you say he's purifying medium of Krishna? अगर कृष्ण उस संघ में प्रकट नहीं हो रहे हैं और आपके अंदर वो सारा शुद्धिकरण का प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो कैसे आप कहेंगे उस संघ में कृष्ण मौजूद? So Prabhupada said there's so many hundreds of translations of Bhagavad Gita, प्रभुपाद कहते हैं हजारों भगवद गीता के ऊपर लोगों ने टिप्पणी किया है, but none of those translations of all those gurus translating Bhagavad Gita didn't make one devotee of Krishna. उन्होंने कहा इतने सारे भगवद गीता का अनुवाद किया गया, उसमें से एक भी गुरु के अनुवाद ने एक भी व्यक्ति को कृष्ण का भक्त नहीं बनाया। But yet my translation, लेकिन मेरा अनुवाद Bhagavad Gita as it is, भगवद गीता यथारूप, so many tens of thousands of people coming wanted to become devotee Vaishnava. हजारों लोग भक्त बनने के लिए, कृष्ण को शरणागत करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए आए। That means it's a bona fide authorized translation, presentation. ये प्रमाणिक आधिकारिक अनुवाद है, तात्पर्य है। But that also has to be explained. लेकिन साथ ही साथ उसको बताना, व्याख्या भी किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से। Right? All the purports are there. It's not just by reading all the purports we're going to understand everything. सारे तात्पर्य वहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे तात्पर्य पढ़ के आप सब कुछ समझ जाएंगे। Because we're still reading with imperfect intelligence, mind, and senses. लेकिन अभी भी हम अपूर्ण मन, बुद्धि, इंद्रिय के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। And the process has to be heard. It's a Shrota parampara. लेकिन ये प्रक्रिया श्रवण की प्रक्रिया, श्रोत प्रक्रिया। Prabhupada said, you cannot understand what my spiritual master said. प्रभुपाद ने कहा आप ये समझ नहीं पाएंगे मेरे गुरु ने क्या Even कहा। if you read some books, you cannot आप कुछ understand. किताबें भी पढ़ लेंगे तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। You have to hear directly from me. आपको सीधे सीधे मुझसे सुनना होगा। So Krishna is always physically, always presently manifested. तो कृष्ण सदैव व्यक्तिगत रूप में मौजूद होते हैं। So present manifestation of Krishna parampara, that is called Shri Guru.
तो वर्तमान में मौजूद कृष्ण परंपरा के प्रमाणिक व्यक्ति को कहा जाता है श्री गुरु। It's present manifestation of Chaitya Guru. ये वर्तमान में चैत्य गुरु के प्रकट रूप है। So when I heard from my spiritual master, I prayed to Krishna, Prabhupada, is he my spiritual master? जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला, मैंने प्रभुपाद से और कृष्णा से प्रार्थना की अपने हृदय में। Everything else is nice. बाकी जितना बताया सब ठीक है। But finally, lastly, because I already had accepted some other types of gurus, अंत में, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही अलग-अलग तरह के गुरु अपने जीवन में स्वीकार किया था, I didn't want to be misled again. मैं फिर से एक बार गलत दिशा में नहीं जाना I didn't want to be cheated again. मैं बार फिर से ठगाना नहीं चाहता था। So I wanted to be 108% sure. तो मैं 108% सुनिश्चित करना चाहता था। So Prabhupada said, then you have to completely depend on Krishna. प्रभुपाद बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर आश्रित Chaitya होना Guru होगा। Paramatma Super Soul. चैत्य गुरु परमात्मा को, And he will give you intelligence and faith. और वो आपको बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे। That's the way that you'll know. इस तरीके से आप जानना। Otherwise, we so I'm disciple of that guru. I'm parampara, तो मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, मैं भी and परंपरा I'm हूँ speaking transcendental knowledge. और मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। I'm speaking also about Krishna. मैं कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूँ, भक्ति के बारे में। I was ordained and authorized by my guru. मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया, नहीं बना रहेगा। हो सकता है उन्होंने कहा है वो भगवान से आ रहा है या नहीं, Right? But that's also not enough to convince you. लेकिन ये पर्याप्त नहीं है आपको। Especially when you see so many cheating gurus out there. विशेष करके जब आप देखेंगे ज्यादातर ठगने वाले गुरु ज्यादा मौजूद हैं। So when I went to Bhubaneswar, Srila Govinda Swami was telling that he was ordered and authorized by Srila Prabhupada in like 3 different ways. तो जब मैं भुवनेश्वर श्रील गौरव समारोह को सुनने के लिए गया, उन्होंने 3 अलग-अलग तरीकों से मुझे दिखाया कि श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने के लिए। But I felt it a little strange, like because Krishna already convinced me. लेकिन मुझे थोड़ा विचित्र लग रहा था ये बात, क्योंकि कृष्णा ने मुझे पहले ही आश्वस्त कर दिया था ये प्रमाणित रूप से। So I'm thinking why he has to now say that he was ordered authorized by Prabhupada. लेकिन बाद मैंने ये सोचा कि वो क्यों हमें ये बता रहे हैं कि उनको आदेश मिला है, अधिकार मिला है प्रभुपाद से। Because he's trying to establish that you must be ordered and authorized by previous acharya. क्योंकि वो इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको To पूर्वाचार्य के establish द्वारा that tattva. आदेश अधिकार प्राप्त होना And for चाहिए। those people who are not so faithful to be able to depend on Super Soul, Chaitya Guru, और जो लोग पूर्ण श्रद्धावान नहीं है परमात्मा के ऊपर, चैत्य गुरु के ऊपर निर्भर but नहीं हो पा Krishna रहे, is not just directly convincing you, कृष्णा उनको सीधे सीधे आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, then you need to have all these other safeguards in place. तो फिर आपको ये अलग अलग सुरक्षा के घेरे की जरूरत है ताकि आप उसके अंदर रह सकें। So it's for those people. तो उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बताया जाता है। So Prabhupada said, if you want to know who's disciplic succession parampara, find out from the previous acharya who he ordered and authorized to take that responsibility. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कौन किसको आदेश अधिकार मिला है गुरु बनने के लिए, तो आप पूर्वाचार्य के पास जाइए, उन्होंने किनको आदेश दिया, अधिकार दिया गुरु बनने का विषय में। Then they start saying, well, you know, through the GBC and through some, they took some vote. फिर वो कहते हैं GBC से कुछ वोटिंग किया गया। And then Prabhupada said, you can't realize parampara disciplic succession through vote. और कहते हैं प्रभुपाद कि आप मतदान के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे कि कौन है It's परंपरा। self-manifested personality. ये स्वयं प्रकाशित होता है। And now they have a no objection certificate. और अभी जो है नया प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है इनके गुरु बनने। Okay, I didn't vote for him to be guru, ठीक है, मैंने इनका मतदान नहीं किया कि गुरु बन सकते हैं, but I didn't object. लेकिन मुझे कोई समस्या भी नहीं है अगर वो गुरु बने तो। This had to be an Indian politician came up with that one. मुझे पक्का उम्मीद है कोई भारत का नेता है, राजनेता ही ने ऐसा कुछ योजना Had to बनाया। be Indian politician. वैसे यह भारतीय राजनीति लगाई I है। didn't vote, मैंने मतदान नहीं दिया है, but I also didn't oppose. लेकिन मैं प्रतिरोध भी नहीं कर रहा हूँ उनका। This is some cheating type of thing. ये एक Isn't it? ठगने वाला It's the मतदान, same thing. एक ही काम कर रहे हैं। So this is self-made guru. तो ये है खुद बनने So you वाला। can say you're ordered and authorized. Well, tell us the pastimes of how and when you were ordered and authorized by the previous acharya. तो मुझे सपना आया था। And then Prabhupada, then I have the quotes where Prabhupada says you'll not receive it in a dream. और फिर मैं सामने रखता हूँ प्रभुपाद की बात। प्रभुपाद कहते हैं आप सपने में ये सारे निर्देश प्राप्त नहीं कर सकते।
So that's an inconvenient quote, right? You can't receive it in the dream. तो प्रभुपाद की बात उनको उनके चीजों को खारिज कर देती है, तो उनको पसंद नहीं आता है। Krishna gives me these quotes, I'm telling you. और कृष्णा मुझे खोज-खोज के ये सारे वाक्य निकाल के I like searching for all of these quotes. मैं ये सारे वाक्य ढूंढता रहता हूँ हमेशा। Okay, now it can't happen in a dream. Then how did it तो happen? कहते हैं ठीक है, सपने में तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा तरीका दूसरा बताइए कैसे आप समझेगा। They cannot say it. फिर आगे कुछ नहीं बता पाते हैं। And then they have to just concoct some other thing, how Prabhupada manifesting to the GBC. और फिर उनको ये कुछ बनाने का जरूरत पड़ता है कि प्रभुपाद जीबीसी के माध्यम से So the प्रकट हो रहे हैं। GBC is the collective Chaitaguru. जीबीसी जो है एक सामूहिक चैत्य गुरु बन जाता है। And of course they're all saying something differently. और सारे जो है चैत्य गुरु अलग-अलग ही बात बता रहे हैं। So that's a little confusing. तो और ज़्यादा हमें भ्रमित कर देता है। What is your question? आपका क्या सवाल प्रश्न है? This is a nice day talking about the cyclic succession, isn't it? ये अच्छा दिन है जो गुरु परंपरा के बारे में बातचीत की जाए। Very important. Because all the mercy from Krishna is going to come through that disciplic succession and parampara. So if we don't understand what is that, and we don't know how to have faith in that, then how will you receive all of the mercy and the blessings from the Lord? कृष्णा की कृपा ये सारी परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर आप परंपरा को समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे आप समझ पाएंगे और ये कृपा कैसे आप समझ पाएंगे? So, Hare Krishna, Srila. Hare Krishna. So Srila Prabhupada is saying in the book Easy Journey to Other Planets, in Easy Journey to Other Planets, he's talking... Which planet are you from? आप कौन से लोक से आए हैं? He's talking about Monitor Guru. It wasn't an easy journey for you, was it? आपके लिए आसान रास्ता नहीं था अलग-अलग लोगों में जाना। से अलग-अलग समस्या में जाना। Yeah? So he's talking about Monitor Guru. He's talking about what? A Monitor Guru. Monitor Guru. Like your wife? उसमें बताया गया है अपने हर एक कदम में क्या सोच रहे होते हैं, क्या-क्या चीजें कर रहे होते हैं, सब चीज पे ध्यान रखते हैं। The wife is the Monitor Guru. पत्नी जो है वो इनके ऊपर निगरानी रखने वाली गुरु है। She'll find out if you step out of line anywhere. वो देखते रहते हैं कब ये जो लाइन बनाई गई है वहाँ से कब बाहर लाइन पे Even लाना they'll है। slap you. यहाँ तक कि वो थप्पड़ ही मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। So, फिर how is it described as the Monitor Guru? तो क्या बताया गया वहाँ निगरानी रखने वाले गुरु के बारे में? Well, it's giving different steps, beginning with giving different steps that the potential disciple has to go through, first accepting spiritual master, and has completed all the different... Guru is Guru, Baba. तो लोग बता रहे हैं उस किताब में बताया गया है कि शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसे धीरे-धीरे 12 स्तर की योग्यता है और उसके तक पहुंचने के बाद वो प्रमाणिक गुरु बन सकते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं गुरु जो है हमेशा गुरु होते हैं। It says that bona fide, what is it? Both the Diksha Shiksha Guru are equal, identical manifestations of Super Soul. तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों परमात्मा के एक समान बाहरी प्रकट रूप होते हैं। So then what happens if your Diksha Guru and Shiksha Guru are saying completely opposite things? तो कैसा होगा अगर आपका दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों उल्टी बात बता रहा हो? So how can they be equal, identical manifestations of Atma Super Soul? तो क्या जीबीसी परमात्मा का बाहरी प्रकट रूप है? And they're all saying some opposite different thing? और सभी लोग उल्टी-उल्टी बातें कर रहे हैं। How is that possible? ऐसा कैसे संभव है? And then you're taking a vote, और उसके बाद वो लोग मतदान and में लेते हैं। whoever wins the vote after all of the power politics, then that's what came from Chaitya Guru? तो इतना सारा राजनीति करने के बाद मतदान करते हैं और उसके बाद कहते हैं अब ये चैत्य गुरु परमात्मा से आ रहा है ये सब। So Chaitya Guru is depending on power politics and everybody to vote before his message can get out there? तो चैत्य गुरु निर्भर है कि इनका राजनीति कब खत्म होगा, फिर मतदान करेंगे तब जाके मैं कुछ बात बोल पाऊंगा। That doesn't make a lot of sense, you know? तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता।
It's like Chaitanya Guru has to wait for these Mataji gurus in the Shastric Advisory Committee to establish what is the truth. तो यानी कि चैत्य गुरु इंतजार कर रहे हैं कब ये माता जी जो शास्त्रिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं कब ये सत्य बोलेंगे तब मैं अपना संदेश बता पाऊंगा. So the scholarly Matajis तो जो विद्वान माता जी हैं are part of the team with the other scholarly Prabhus, और उसी टीम का भाग है जिसमें सारे और विद्वान प्रभु लोग भी हैं and they're just going through all of the books और वो सारी किताबों को खोज के निकालते and हैं they're trying to find out what is the truth. और वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य क्या है. They're not quite there yet. अभी तक वो वहां तक पहुंचे नहीं है सत्य तक. They had to adjust the previous versions. जो पहले जो उन्होंने गलत सत्य बताया था उसको पहले ठीक करने का प्रयास This कर रहे हैं. time, लेकिन इस बार it's going to be absolutely correct. ये एकदम सही होगा. And then और you फिर can take it came from Chaitanya Guru. तब आप मानिएगा कि ये चैत्य गुरु से आ रहा है. Of course, after they vote that edition is absolute. और बाद में मतदान करते हैं कि हाँ ये जो प्रस्तुति की गई है एकदम सत्य है. Where does it say like that in Guru Sadhu Shastra? तो गुरु साधु शास्त्र में कहाँ ये बात बताई गई है. Bona fide Guru, he already heard the truth. He knows the truth. He's conversant with the truth. He doesn't need these people, scholars, so-called scholars, speculators, trying to study to find the truth. तो प्रमाणिक गुरु को पहले ही सत्य पता होता है. उन्हें सत्य श्रवण किया है, सत्य का साक्षात्कार किया है. उन पर बाकी लोगों को की जरूरत नहीं होती कब वो आपके बताएंगे कि सत्य क्या है. Krishna already told them. कृष्णा ने पहले उनको सत्य बता दिया. Isn't it? ऐसा है या नहीं. So what kind of guru do you want? तो किस तरह का गुरु आप चाहते हैं. So, you want a monitor guru? तो आप निगरानी रखने वाला गुरु चाहते हैं Or you want a real guru? या आपको असल गुरु चाहिए. About this small ant, and I get to deal with this guy, you know? ये इस छोटी चींटी का चिंता कर रहा है और मैं चिंता कर रहा हूँ इस चींटी का. Right? That small ant can't really bother me, right? But this guy is very capable. ये छोटा चींटी मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा लेकिन ये आदमी ये बहुत योग्य है मुझे परेशान That's करने why I के call him Adam Ant. लिए. इसीलिए मैं इसको कहता हूँ चींटी आदम. When he's doing that, I'm like I'm more worried about him than the ant, you know? जब वो ये करने आता है तो मुझे चींटी से ज्यादा चिंता नहीं, उससे ज्यादा चिंता नहीं है. The ant can't slap me, you know? This guy can slap me, ये you know? चींटी मुझे थप्पड़ नहीं मार पाएगा लेकिन ये आदमी मुझे थप्पड़. Hear this all, you gave whatever you spoke today. Very grateful for that. What? He's saying he's very grateful for whatever you have spoken. He wanted to hear these things, so he's thankful that you spoke all of these things. Very good. बहुत बढ़िया. I would also like, could you please share what is this expert training and guidance you were speaking about earlier? What is the expert training and the guidance? Yes, you said opportunity is given and then the guru trains That's you. what we're doing. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं तो आपने बताया कि एक निपुण मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए. मुझे बता रहे हैं वही तो हम यहाँ कर रहे हैं. This is the expert training and guidance. ये है आपका बिल्कुल दक्ष प्रशिक्षण और Because then you're hopefully understanding what are the two parampara. You won't have access to it. Prabhupada said you'll have no access to that knowledge. वरना ये जो जितनी भी कृपा जो परंपरा के माध्यम से आपके पास आती है आपके पास वहाँ पहुँचने का कोई एक्सेस नहीं है. So if we don't get mercy from Krishna and Krishna parampara, we don't understand it, then Prabhupada says your intelligence and your understanding in this philosophy will be misguided. प्रभुपाद बताते हैं अगर आपको कृष्ण परंपरा की कृपा नहीं मिल पा रही है Just to shoot us up the information. तो क्योंकि माया अभी भी आपके मिथ्या अहंकार के स्तर में दिव्य दंभ के स्तर में और भौतिक कलमश के स्तर में अभी भी आपके साथ खिलवाड़ कर रही है तब अभी तक आपको ये सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया है. Otherwise, where do you surrender and do submissive our reception? वरना कहाँ आप जाके शरणागत करेंगे और विनीत भाव से उसे श्रवण करेंगे. Unless Krishna convinces you, you'll not really surrender and do submissive our reception. जब तक कृष्ण आपको खुद आश्वस्त न कर दे तब तक कहीं जाके आप शरणागत नहीं कर सकते ना हो वहाँ के विनीत भाव से सुन You'll सकते. still be like doubtful and suspicious and trying to protect yourself and feeling like
you're getting cheated or you're going to get cheated, you'll be skeptical, you'll still have this type of mentality. तभी भी वहाँ जाने के बाद आपके अंदर एक संदेह चलता रहेगा कि कहीं आप ठगे ना जाएं, क्या आप ठगा रहे हैं, ये सब सारी चिंताएं मन में चलती रहेगी जब आप सुनते रहेंगे तब भी. So therefore we're not really trusting Krishna, not really trusting the Guru. इसका मतलब हम गुरु के ऊपर विश्वास और कृष्ण के प्रति विश्वास So you नहीं करते. can't not trust them and then surrender and submissively hear from them at the same time. तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप उनको शरणागत करके उनसे विनीत भाव से श्रवण कैसे कर पाएंगे? That's why this is not a small topic. तो इसलिए कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, It's critical topic. ये बहुत ही And nobody महत्वपूर्ण विषय talking है about. और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता. Everything's just being assumed like it's already been done. सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब पहले से ही किया जा चुका I है. have a guru, he's talking about Krishna, मेरे पास I'm getting गुरु है, purified, I'm getting transcendental knowledge. वो कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मुझे दिव्य ज्ञान मिल रहा है. So we'll just be sentimental, theoretical understanding. भावुक हमारा समझ बहुत मौखिक है. Without Krishna, Tattvavid Guru manifesting through pure bio medium, only you can have theoretical knowledge. बिना कृष्ण के और कृष्ण के तत्वविद गुरु के माध्यम से उनका प्रकट हुआ, उनसे सुनने बिना आपका सारा ज्ञान केवल मौखिक स्तर पे रहेगा. That's a jnana. ये है ज्ञानी, ज्ञान का स्तर. Tattva-vijnanam means realized scientific knowledge. तत्व विज्ञान का मतलब है आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान. So unless we connect, Prabhupada says, unless you connect with Krishna in Krishna Parampara, then you're outside of it. तो जब तक आप कृष्ण के साथ, कृष्ण परंपरा के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक आप परंपरा से बाहर हैं. Therefore, your intelligence will always be, confused, disturbed, इसीलिए आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी, परेशान रहेगी, and you'll not be able to understand it properly. और आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे. Prabhupada said, this is the mystery of disciplic succession. तो बात कहते हैं ये है परंपरा का रहस्य. So everybody's acting like they understand, disciplic succession and parampara. There's a Guru Tattva. तो बताया जाता है दो सबसे कठिन से समझने वाले तत्व हैं, शिव तत्व और गुरु तत्व. So we've totally understood one of the most difficult tattvas. तो हमने जो सबसे मुश्किल से समझ में आने वाले तत्वों को हमने पूरी तरह समझ लिया है. Where we're directly seeing and hearing Krishna manifestation. तो क्या हम सीधे सीधे कृष्णा को किस रूप से वो प्रकट हो रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं? It says, I know my spiritual master is the servant of the servant of the servant of Mahaprabhu. वो कहते हैं हाँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु महाप्रभु के सेवक के सेवक के सेवक हैं. But I can also understand by their mercy that there's a direct manifestation, incarnation of the Lord manifesting and speaking through him. लेकिन साथ ही साथ उनकी कृपा के माध्यम से मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि सीधे सीधे भगवान उनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं और सीधे सीधे उनके माध्यम से बात भी कर रहे हैं. That's pure via medium of Krishna. ये है कृष्णा का शुद्ध माध्यम. So if you don't understand what does that mean, then how you can be a pure via medium of Krishna? तो अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो आप खुद कैसे शुद्ध माध्यम बन रहे हैं कृष्ण के? Don't you need Krishna to be a pure via medium of Krishna? पहले तो आपको कृष्णा चाहिए. कृष्णा का शुद्ध माध्यम बनने के लिए पहले कृष्णा की जरूरत है. Otherwise, it's just like a download. Okay, one material intellect to another material intellect. वरना ये बस डाउनलोड हो रहा है, एक भौतिक बुद्धि से दूसरे की भौतिक बुद्धि में बात डाली जा रही है. Or one sentimental mind to another sentimental mind. या एक भावुक व्यक्ति के मन से दूसरे भावुक व्यक्ति के मन में जा रहा है. This is a transfer on soul platform. ये आदान प्रदान आत्मा के स्तर पे होता है. So if we're not on that platform and not depending on that platform, how can you expect a transcendental transfer on that spiritual node? Is irrelevant. आप समझ पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं. Okay? ठीक है? You all right? अब ठीक है? All right. Who else was there? Yes? और कौन है? I will. In the version I'm reading from In the what? in a database that In the version of Veda base. In the database. yeah, Yes. it says a person who knows the science of Krishna is factually a bona fide spiritual master. Says the person who knows the science of Krishna, he's a bona fide spiritual master. No, is factually a bona fide spiritual master. There you go. He's factually a bona fide spiritual master. One who knows. The science of Krishna, he's factually a bona fide spiritual master.
what does the science of Krishna mean? Let's define the term. तो प्रभु बता रहे हैं, मैंने पढ़ा वेदावेस में कि बताया गया है जिसको कृष्णा के विज्ञान के बारे में पता है तो वो तत्व में आध्यात्मिक गुरु है। तो गुरुदेव बता रहे हैं ठीक है, कृष्णा के विज्ञान का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। The science of Krishna consciousness, right? आपने What बात is किया? this? उत्तर दे Right? दिया। Tattva Vijnana means factually scientific knowledge of the absolute truth. तत्व विज्ञान का मतलब है कि तत्व में साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ परम सत्य का ज्ञान, As compared to Gyan, तो ज्ञान के तुलना में which is a theoretical understanding. जो कि एक मौखिक स्तर पे समझ है। So scientific understanding of Krishna consciousness means Tattva Vijnana. तो वैज्ञानिक कृष्ण भावनगरी की समझ का अर्थ है तत्व विज्ञान। Only he can be bona fide guru. केवल वही प्रमाणिक गुरु हो सकते हैं। Because why do we go to the gurus? We want Krishna to manifest to help us, right? तो हम गुरु के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण उनके माध्यम से प्रकट होकर हमारी मदद करने वाले हैं। So if the guru only has theoretical academic information and no practical scientific intelligence and faith, then that means he didn't even get mercy. How is he going to give you any mercy? अगर गुरु के पास भी केवल सैद्धांतिक या मौखिक ज्ञान है, उसने खुद ये श्रद्धा, कृपा और ये साक्षात्कार नहीं किया उस ज्ञान का, तो आपको वो कैसे कृपा दे पाएगा? आपको कैसे वो साक्षात्कार मिल पाएगा? Okay, I have academic theoretical knowledge of Krishna consciousness, but you should listen to me because I'm going to give you scientific absolute information of Tattva Vijnana. मेरे पास सैद्धांतिक मौखिक समझ है कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के बारे में, पूर्ण श्रद्धा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन मैं आपको सारा वैज्ञानिक तत्व विज्ञान साक्षात्कार दूंगा। ये कैसे हो सकता है? How's possible? ये संभव कैसे? You can only give what you have. आप वही दे सकते हैं जो आपके पास होगा। Right? So if you have 100 rupees in your pocket, right, you can't say, well, here's 5,000 rupees. आपके जेब में अगर 100 रुपए है, आप ये नहीं कह सकते ये लो 5,000 रुपए। You can only give what you have. आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। So the real question is, like someone said, if someone says to you, you know, this is some gold for you. आपको ये सवाल कुछ पूछना चाहिए, अगर कोई सामने आपके सामने सोना ला कर रखे तो आप So you have to find out which mine did it come from. आपको ये पता लगाना होगा ये सोना कौन से खान से निकाला गया है। Otherwise, how do you know that it's real gold? वरना आपको कैसे पता चलेगा ये असली सोना है या नहीं? So you have to see who surrendered and submissively heard in Mahaprabhu's parampara. तो आपको देखना होगा किसने विनीत भाव से शरणागत करके श्रवण किया है महाप्रभु की परंपरा में। So did they receive perfect knowledge from perfect source? क्या उन्होंने पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से प्राप्त किया है? And have they realized that knowledge? और क्या उन्होंने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया? And then been ordered and instructed and empowered to present it? और क्या उनको आदेश अधिकार मिला है उसको प्रस्तुत करने का? Otherwise, the guru, he's going to say, okay, I know you only understand this theoretically and sentimentally, but go give them tattva vijnana. वरना ऐसे गुरु हैं जो केवल मौखिक स्तर पे सैद्धांतिक स्तर पे समझ पाए हैं, यद्यपि और फिर भी लेकिन मैं तत्व विज्ञान करूँ। How's possible? ये कैसे संभव है? I know you read some books on being. तो आप जाइए और सर्जरी करना शुरू कर दीजिए। You can just repeat what he read in the book. वो बस वही दोहरा पाएगा जो किताब में लिखा था बस। Adam's trying so hard, man. You gotta give him credit. बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं, इनको कुछ हमें श्रेय देना होगा। So if you're doing such a serious thing as a brain surgery, अब इतना गंभीर चीज है, ब्रेन सर्जरी इतना गंभीर चीज है, उसको करने के लिए you gotta go through a bona fide authorized university. आपको प्रमाणिक आधिकारिक विश्वविद्यालय में जाना होता You है। gotta be accepted there. वहाँ पे आपको You have to be trained there academically and practically. प्रवेश करना होता है, वहाँ अच्छे से प्रशिक्षण लेना होता है, अच्छे से शिक्षा लेना होता है। You have to have more than just a theoretical understanding. You have to have a practical expertise. केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक अनुभव उनका होना चाहिए। And then those who are expert in the field, they can say, okay, now we can trust that this person can open up a brain surgery clinic. और जो पहले से उस क्षेत्र में निपुण है, वो बाद में कहेंगे हाँ अब ये व्यक्ति इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, अब ये बाहर जाके कोई क्लिनिक खोल सकता है। Right, so, and that's just material science. और ये तो केवल एक भौतिक विज्ञान की उदाहरण So है। spiritual science is much more subtle than that. तो आध्यात्मिक ज्ञान तो इससे कहीं भी ज्यादा ऊपर सूक्ष्म की बात है। So bona fide guru, he's not going to just send somebody out there who has some
some little bit of academic knowledge. तो प्रमाणिक गुरु कैसे ऐसे ही व्यक्ति को बाहर नहीं छोड़ देंगे जो केवल अपना विद्वता के आधार पर कुछ शैक्षणिक प्राप्त या किताबी शिक्षा प्राप्त I किया। have some understanding of the science of Krishna consciousness. तो मैं कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के बारे में कुछ समझता हूँ। Factually, actually, truly, really. असल में, तत्व में, असलियत में। But you see how you can just read something and come to a completely different conclusion. लेकिन आप देखिए, आप कुछ पढ़ने जाते हैं और अंत में आप बिल्कुल ही अलग निष्कर्ष से पहुंच जाते हैं। So it just looks like somebody who knows something about the science of Krishna consciousness. He can just tell someone about Krishna and be guru. तो ऐसा लग रहा है देखने में कि हाँ, जिसको कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के बारे में थोड़ा पता है, वो जाके बाकी लोगों को बताए और गुरु बन जाए। That's why Prabhupada said you can very easily misunderstand just by reading. इसलिए प्रभुपाद कई बार कहते हैं आप बहुत ही आसानी से गलत समझ बैठेंगे केवल पढ़ने। You must hear from someone who understands what's in the book. आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना होगा जो एक समझता है इन किताबों में क्या Who लिखा can है, properly explain it to you. जो बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने व्याख्या कर Many सकता है। times Gurudev would be, reading something and he says, "Oh, you can easily see this from an apparent point of view." कई बार गुरुदेव कई सारी चीजें पढ़ते थे और कहते थे कि इसको बहुत ही आसानी से आप गलत समझ सकते हैं। So he would stop and say, "Okay, let's just define each one of these words तो फिर वो रुकते थे absolutely." और कहते थे चलो एक शब्द का हम यहाँ उसका प्रस्तुति ही बदल जाता है। So like I said, I read Prabhupada's books for 5-6 years every day, 2-3 hours a day. तो जैसे मैंने बताया मैं पहले 5-6 सालों तक प्रभुपाद की किताबें हर दिन 2-3 घंटे पढ़ता था। So I saw how far can that type of, academic approach bring you. तो मैं देख पाया इस तरीके से अपनी किताबी शिक्षा के माध्यम से मैं कितना आगे भक्ति में बढ़ पाया। So you can say, okay, he's not a big scholar. Okay, that's true. तो आप कह सकते हैं हाँ इतने बड़े ये विद्वान नहीं है, ये सत्य बात है, ठीक है। But definitely honest attempt was there to understand it by reading. लेकिन एक अवश्य ही एक ईमानदार प्रयास हो रहा है इसको पढ़कर समझ पाने के लिए। Please make a way that if devotees are coming to pay obeisances, please make a nice path for them. एक अच्छा रास्ता बनाइए, जो भी लोग भक्त आकर प्रणाम करना चाहते हैं, दंडवत करना चाहते हैं, उनके लिए सही से जाने की रास्ता बनाइए। Show Maharaj, show. So, you understand? आप समझ पाए? So this sentence, the In the newer version of that quote, now that word factually has been removed. So Not removed, changed. The position of the factually word changed. that word factually, now it has been changed. The position where it was written. Now, factually is missing. it's not missing. Factually is after. I think when you read it, you read a person who factually knows the sense of Krishna is a bona fide spiritual master. But the version I have, the person who knows the sense of Krishna is factually a bona fide spiritual master. So he's basically saying the word factually where it was placed before, now it has been placed at some other place. So it changes the meaning. Now you better definitely hear from someone who understands it. तो प्रभु बता रहे हैं आपने जब आप जब पढ़ रहे थे उसको उस किताब से, तो वहाँ पे जो एक शब्द है तत्व, उसको एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया गया, मैं जहाँ पढ़ रहा था वहाँ से। तो गुरुदेव बता रहे हैं अब तो आपको निश्चित ही किसी ऐसे सुनना होगा जिसको असल में ये तत्व विज्ञान पता है, वरना आप ऐसे ही गलत समझते रहेंगे। Any other last point? कोई आखिरी प्रश्न? Yeah. हरे कृष्ण। So, it is this I have heard from the devotees that you said someday the common sense is actually Krishna's intelligence. Coming from Krishna. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बताया है कि सामान्य जो समझ हमारे अंदर ज्ञान आता है वो कृष्णा से आता है। कृष्णा गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि सारा ज्ञान कृष्णा से ही आता है। It's just you want to be cheated, you want kripa or you want vanchana. बस सवाल ये है कि आप कृपा पाना चाहते हैं या वांछना पाना चाहते हैं। So, generally we have seen that common sense is always right. It is never wrong. Common sense is never wrong. Never wrong.
That's what I have experienced. That what I believe actually. Common sense, Prabhupada says common sense, if you're looking for a guru, you don't go to the milk store. तो प्रभु बता रहे हैं मेरा अनुभव है कि सामान्य ये जो बुद्धि समझ आती है ये कभी भी गलत नहीं होता है। तो मैं इसको जानना था। तो गुरुदेव बता रहे हैं प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो सामान्य बुद्धि जो आती है, जैसे कि मतलब अगर आपको गुरु ढूंढना हो या आपको हीरा खरीदना हो तो आप दूध की दुकान में नहीं जाते हीरा खरीदने। That's a common sense. ये है एक सामान्य ज्ञान। So the one who is not yet तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण परंपरा के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तो क्या उसको कृष्ण के द्वारा बुद्धि मिलती है सामान्य बुद्धि समझ के माध्यम से? तो गुरुदेव बता रहे हैं आपके सामान्य बुद्धि की परिभाषा क्या है? See, the premise of that statement is that the soul wants to sincerely, seriously surrender to Krishna. तो आपका सवाल इस तरीके से खड़ा हो रहा है कि आत्मा जानना चाहती है कि कैसे वो कृष्ण को गंभीरता से, एक निष्ठा से शरणागत कर सकता है। And Krishna, as Paramatma Chaitya Guru, he'll know, oh, this soul is looking for me, wants to surrender to me. और कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु ये देख पाएंगे कि ये आत्मा मुझे शरणागत करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। Then Krishna will make an arrangement to meet bona fide Guru. तो कृष्ण एक व्यवस्था बनाएंगे कि आप प्रमाणिक गुरु से मिल पाएं। And he'll give you intelligence and faith within inside who is such personality. और वो भीतर से वो बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे कि कौन है वो व्यक्ति। So really that intelligence comes from Adi Guru, Chaitya Guru, Krishna, Antaryami. तो वो बुद्धि, वो श्रद्धा आदि गुरु, चैत्य गुरु, अंतर्यामी कृष्ण से आती है। So he gives that intelligence and faith. तो वो बुद्धि और श्रद्धा देते हैं। Now somebody, conditioned soul, may say, well, my intelligence and faith tells me this person is bona fide Guru. तो हो सकता है कोई बद्ध जीव ये कहे कि मुझे ये बुद्धि और श्रद्धा मिल रही है कि मुझे इस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। So I'm taking that coming from Krishna. तो क्या मैं उसको ऐसा लूँ कि ये कृष्ण से आ रहा है? So that's also why previous acharya has to order and instruct. The next person must be ordered and authorized by previous acharya who was ordered and authorized by his guru. प्रभुपाद बताते हैं उसे पूर्व आचार्य से आदेश प्राप्त करना होगा, अधिकार प्राप्त करना होगा। उन्होंने भी वो आदेश और अधिकार अपने गुरु से प्राप्त किया है। So one must receive directly order and authorization and instruction from previous acharya. तो किसी को सीधे सीधे आदेश अधिकार प्राप्त किया होना चाहिए अपने गुरु से जो प्रमाणिक परंपरा। Otherwise he cannot be bona fide authorized guru and parampara. वरना वो प्रमाणिक अधिकारी गुरु परंपरा में नहीं हो सकते हैं। So if someone is saying, okay, I have intelligence and faith, I think it's coming from Krishna that this person is my guru. तो कोई ऐसा कह सकता है कि मुझे ऐसी बुद्धि मिल रही है, ऐसी श्रद्धा मिल रहा है कि ये व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रतिनिधि, ये गुरु है। Well, then was he ordered and authorized in parampara? लेकिन क्या उनको आदेश और अधिकार मिला है परंपरा के माध्यम से? And also, what is that person's understanding and realization of this tattva vichar presentation? और साथ ही उस व्यक्ति की क्या समझ है या क्या साक्षात्कार है इस तत्व विज्ञान के तत्व विचार के? How factually conversant are they in understanding all of these tattvas? तो कितने उनको इस वैज्ञानिक ज्ञान है इस सारे तत्वों का? Because that means he would hear perfectly from perfect source, he would understand it. क्योंकि बताया जाता है अगर आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से सुन सकते हैं तो आप पूर्ण तरीके से समझ To सकते be able to present it absolutely. हैं और वो परम सत्य को बिल्कुल वैसा ही यथारूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। And then what is the effect of hearing from that person? और ऐसे व्यक्ति को हिसाब किताब देखें। Just like we have Guru Sadhu Shastra. जैसे हमारे पास गुरु साधु शास्त्र, All of those things must be connected तो ये सारी चीज आपस में संबंधित होनी in चाहिए order to be able to fully trust it. ताकि हम उस किसी बात पे पूर्ण विश्वास कर सकें। Otherwise, if it's just your feelings and your emotions and feelings and your so-called intelligence, how do you know that's not coming from Maya? That Maya is bewildering you. तो अगर आप बस मान रहे हैं मेरा ये अनुभव है, मेरा ऐसे भावनाएं, मेरे विचार ऐसे आ रहे हैं, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि ये माया से आ रहा है या मेरे ये कृष्ण से आ रहा है? Especially if your conditioned soul has polluted consciousness, how can you trust that intelligence and faith is coming from Krishna? विशेष करके जो बद्ध जीव, उसकी बुद्धि जो है माया के द्वारा प्रभावित है, कैसे वो समझ पाएगा कि ये बुद्धि माया से आ रही है या कृष्ण से आ रही है? Another thing is if you are sincere and serious, then
Krishna said, I'll give you intelligence and faith. और दूसरी बात ये है, कृष्ण बता रहे अगर आप गंभीर एकनिष्ठ हैं तो मैं आपको बुद्धि दूंगा और श्रद्धा दूंगा. So if Krishna gives you intelligence and faith, then why are you so shaky in your faith? तो अगर कृष्ण आपको बुद्धि और श्रद्धा दे रहे हैं तो आपका बुद्धि और श्रद्धा इतना ही If डगमगा क्यों Krishna रहा है? wants to convince you, Krishna cannot convince you. तो क्या कृष्ण अगर आपको स्थिर करना चाहते हैं तो क्या आप बुद्धि दे के आपको स्थिर नहीं कर पाएंगे? So why you're just accepting and rejecting platform? तो क्यों आप अभी कभी स्वीकार करना और कभी अस्वीकार करने के स्तर पे? That means your intelligence and faith is on material mental platform. यानी कि आपकी बुद्धि और श्रद्धा भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे है. Therefore, you're not 100% convinced. इसीलिए आप 100% आश्वस्त नहीं है पूरी So तरह if से. you have this type of doubt, this type of weakness, this type of confusion, accepting and rejecting, why are you saying that that intelligence and faith is coming from Krishna? Krishna will give you that type of intelligence and faith. तो आपको अगर पूरा संदेह हो रहा है, आप कमजोर हैं, पूरी तरह के आश्वस्त नहीं, आपको शरणागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये इस तरह का श्रद्धा, डगमगाया हुआ श्रद्धा, क्यों आप कह रहे हैं ये कृष्ण से आ रहा है और कृष्ण आपको ये बुद्धि श्रद्धा दे रहे हैं? You're not even convinced. यानी कि आप खुद भी आश्वस्त नहीं है उस बुद्धि श्रद्धा So से. what is the quality of intelligence and faith Krishna is giving you that you're not really convinced? तो किस तरह का बुद्धि और श्रद्धा आपको कृष्ण दे रहे हैं कि आप खुद आश्वस्त ही नहीं हो पा रहे हैं उससे? One day you're saying yes, yes, yes. Next day you're saying no, no, no. एक दिन आप कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, दूसरे दिन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं. One day you're saying yes, he's my guru, and the next day you're saying no, I doubt that he's my guru. एक दिन आप कहेंगे हाँ मुझे लगता है ये मेरे गुरु है, दूसरे दिन कहेंगे और मुझे थोड़ा शक हो रहा है ये मेरे गुरु है. That's a symptom of mental platform. ये है संकेत कि आप अभी मानसिक स्तर पे हैं. Accepting, rejecting, accepting, rejecting. कभी स्वीकार कर रहे हैं, कभी अस्वीकार कर रहे हैं. That's the proof of that intelligence and faith not coming from Krishna, coming from Maya. इसका ये यही प्रमाण है कि ये बुद्धि और श्रद्धा कृष्णा से नहीं माया से आ रही है. So, like Prabhupada is saying in that conversation with Mr. O'Grady, that the problem is that if you are sincere, it's not difficult to find a spiritual master, bona fide spiritual master. The difficulty is if you are sincere. Sincere and serious to surrender to Krishna. Yeah. So, what does this mean to be sincere? Is it the desire of soul, pure desire, or like some practical dealings or some activities? Your soul has a sincere desire to understand about Krishna and wanting to surrender and serve Krishna. वो सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था मिस्टर ओग्रेडी और प्रभुपाद के वृत्तांत में बता रहे थे कि हमें गंभीर और एकनिष्ठ होना चाहिए. तो गुरुदेव बता रहे हैं आपकी आत्मा के अंदर की जो इच्छा है कि मैं कृष्णा को पूर्ण शरणागत उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ये कितना गंभीर एकनिष्ठ है. Krishna, as Chaitanya Paramahamsa, he'll understand this personality, this soul is looking for me. He wants to understand me, and he wants to surrender to me. Then Krishna will know that is what is your soul's desire. तो कृष्णा परमात्मा चैत्य गुरु ये देख पाएंगे ये आत्मा मुझे ढूंढ रहा है, मुझे जानना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, मुझे शरणागत करना चाहता है. तो कृष्णा इस बात को जान जाएंगे. Krishna will know very well whether it's just some sentimental feeling, emotion, or whether it's genuinely coming from your soul. तो कृष्णा बहुत आसानी से जान जाएंगे कि ये कोई भावुक होकर कुछ निर्णय दे रहा है या उसके आत्मा की असल इच्छा है मुझे शरणागत करना. We cannot cheat Krishna. आप कृष्णा को ठग नहीं सकते. So Krishna, he is the judge. तो कृष्णा वो भीतर है, वो निर्णय करते हैं. Right? He's the witness and the judge. वो साक्षी है और वो निर्णय करता है. And he'll say, और वो बोलेंगे. and you'll see by the results and the effect. और आप परिणाम के आधार पे, प्रभाव के आधार पे निर्णय कर पाएंगे. Because Krishna says, as you surrender to me, then I reward you accordingly. कृष्ण कहते हैं जिस तरीके से भाव से आप शरणागत करेंगे मैं वैसा ही आपको परिफल दूंगा. So if Krishna is not rewarding us and showering his mercy on us, then how we're saying we should question what is our sincerity and seriousness. तो कृष्ण अगर हमें इस तरह का पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं हम गंभीर हैं, हम एकनिष्ठ हैं कृष्ण को शरणागत करना. Okay. चलो. Yeah. Does that make sense? आप समझ पाए? I always just say, try to be so convinced yourself that you're able to convince Krishna. मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप स्वयं इतना आश्वस्त रहिए कि आप कृष्ण को आश्वस्त कर सकें. We only have two people to convince. आपको दो लोगों को ही केवल बस आश्वस्त करना है. Ourselves खुद को and Krishna. और कृष्ण.
So that's between every soul and Krishna. इसका मतलब हर एक आत्मा और कृष्ण के बीच की बात है. You can get all the information, Guru Sadhu Shastra, but at the end of the day, we're the ones who have to, go in your room and pray to Krishna and convince Krishna or not. हम सारी जानकारी गुरु साधु शास्त्र सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अंत में उस आत्मा को निर्णय करना है वो अपने कमरे में जाकर भगवान से कृष्ण से वो उस तरीके से प्रार्थना करें या नहीं. वो उनके और कृष्ण के बीच. And then Krishna says, according to what you deserve, और कृष्ण बताते हैं जिसके भी आप लायक हैं then you'll get that result. आपको वो परिणाम मिल जाएगा. So if we really want mercy, then Krishna says, I'll give you intelligence and faith how to get the kripa. तो अगर आप असल में कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण बताते हैं मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे आपको कृपा मिल सकती है. If we're cheating and we deserve to be cheated, Krishna said, then I'll give you vanchana, I'll cheat you. और अगर हम ठग रहे हैं और हम ठगना चाहते हैं तो कृष्ण बताते हैं मैं आपको वांछना दूंगा, मैं आपको ठगूंगा. My Gurudev used to say, what kind of guru do you want? You want a guru sent by Krishna or you want a guru sent by Maya? तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे आप किस तरह के गुरु चाहते हैं, गुरु जो माया के द्वारा भेजा हुआ या कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ. That's up to us. तो ये हमारे ऊपर है. And then we get what we deserve. और हमें वो मिलेगा जिसके हम लायक हैं. And the majority of the people, they're not really serious. और ज्यादातर लोग गंभीर नहीं हैं. So this type of cheating guru has to be there. तो इस तरह से ठगने वाले गुरु भी मौजूद होने चाहिए. Because majority of the people deserve to get cheated. क्योंकि ज्यादातर लोग ठगना चाहते हैं. And the gurus, self-made gurus, they're cheating because they also want to be guru. और क्योंकि ये स्वयं निर्मित गुरु ये ठग भी रहे हैं क्योंकि वो खुद गुरु बनना चाहते हैं. But they're not bona fide authorized in parampara. लेकिन उनको प्रामाणिक परंपरा का आदेश और अधिकार नहीं मिला. So they're also posing cheating. वो भी दिखावा कर रहे हैं, ठग रहे हैं. So it's the cheaters and the cheated. तो ठग और ठगों का समाज. And majority of people, they need to go through this type of experience. और ज्यादातर लोगों को ऐसा अनुभव से गुजरना ही Then पड़ेगा. one day, one life will cry for real bona fide guru and parampara. और एक दिन इसी जन्म में इसी जीवन में हम कृष्ण परंपरा के लिए रोएंगे. Because we will not want to cheat anymore or get cheated again. क्योंकि हम और ज्यादा ठगना नहीं चाहते ना हम ठगाना चाहते हैं. Then Krishna as witness and judge will send you a very nice guru and his parampara. कृष्ण उसके गवाह हैं, कृष्ण उसके साक्षी हैं, वो निर्णय करेंगे आपको प्रमाणिक गुरु परंपरा में भेजना है या नहीं. That's what I heard. That's what I understand. ये मैंने सुना और यही मैंने समझा. That's what Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, all acharyas say exactly the same thing. यही श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे आचार्यों ने यही एक ही बात कही है. Siddhanta is one. सिद्धांत हमेशा एक है. Not even two. यहाँ तक कि दो भी नहीं. Any last thing? कोई आखिरी चीज? Yes. हाँ. Are we all right to continue to speak? क्या ठीक है हम आगे चर्चा जारी रख सकते हैं? We're all right? ठीक है? प्रभु ठीक है? Good. ठीक है? Mataji, Hare Krishna. Krishna, Krishna Gurudev. Now I know why mosquito want to kill me every night. Now? Now I know why the mosquitoes are biting me a lot at night time. The mosquitoes are biting you? माता जी कह रही अब मैं समझ पा रही हूँ क्यों मुझे मच्छर रात में काटते हैं. I want to ask you about Manchada. Manchada Purushottama. Vaishnava etiquette. The what? Okay. What does that have to do with mosquitoes? तो माता जी कह रही है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जानना चाहती हूँ. मुझे बता रहे मच्छर और उसका क्या लेना देना. Are you jumping from mosquitoes to Lord Ram? तो मच्छर से आप भगवान राम तक कैसे पहुँच गए? My question, I thought about mosquito. So I asked about why Dhamma don't want to give answer Vidura about Krishna. And Uddhava told Vidura, so you go to Maitreya Rishi and listen from Maitreya Rishi. Ishla Prabhupada in commentary
why Uddhava will not give the answer to the Guru? You go to Maitreya and he will give the answer to you. Because Uddhava told Vidura, so he is youngest about Vidura, and he can't told about Krishna Vidura, and told. It's Srila Prabhupada explained that Uddhava was very intimate devotee of Premi Bhakta of Krishna. तो माता जी सवाल पूछ रही हैं कि कैसे जो है विदुर जब उद्धव के पास गए सवाल पूछने के लिए, तो उद्धव ने उनको कहा आप मैत्रेय ऋषि के पास आइए पूछने के लिए। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद ने बताया है उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही करीबी प्रेमी भक्त हैं। But Maitreya, he was more like into monism. He was more into impersonalism. लेकिन मैत्रेय थोड़े मायावाद प्रकृति के स्वभाव के थे। So he wasn't really pure devotee. He wasn't really qualified to even really be there. तो यानी कि वो प्रामाणिक व्यक्ति या योग्यवान व्यक्ति नहीं थे वहाँ रहने के But लिए। somehow or other, it's explained that Krishna just showed some special mercy on him. लेकिन ऐसा बताया जाता है किसी तरह से कृष्ण ने उनको एक विशेष कृपा दी, So it's like a agyata sukriti. उनको एक अज्ञात स्वीकृति मिली। He got some special mercy, then he was able to get purified and able to also hear Krishna instruction. तो उनको अज्ञात स्वीकृति मिली, उसके माध्यम से वो शुद्ध हो गए और साथ ही साथ वो भी मैत्रेय भी कृष्ण को सुन पाए। So Krishna wants to use somebody, he can purify them, show special mercy and qualify them. अगर कृष्ण किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको ऊपर विशेष कृपा करेंगे, उनको शुद्ध करेंगे और उनको योग्यवान भी बना देंगे। In order to preach a specific topics. एक विशेष विषय को किसी और को प्रचार करने के लिए। Yes, because this Manshyada don't manifest when Srila Shukadeva Goswami talked about Srimad Bhagavatam. See, Srila Vyasadeva, father of Srila Shukadeva Goswami, and this is youngest boy. So because the first question she asked, because Uddhava said because I am younger than you, Vidura, so he sent him to Maitreya. So but here in Sukadeva Goswami cases, there was Vyasadeva and other many older than him. They were there, but Sukadeva Goswami was speaking. Still there, he was younger, but still he was speaking. But in Uddhava's case, Uddhava didn't speak. What is the difference? What is the difference? What's the difference Yes. between why Uddhava wouldn't speak to him, even Yes. though he was younger, And but Shukadeva was... can. तो माता जी का सवाल है कि जब विदुर ने सवाल पूछा उद्धव से, तो उद्धव ने ये कहा कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, इसलिए उन्होंने उनको मैत्रेय के पास भेजा। लेकिन दूसरा उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी, उनके सामने व्यासदेव जैसे बहुत और भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति मौजूद थे, तब भी सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे भी प्रवचन दिया। तो यहाँ दोनों में क्या अंतर है? So he heard from his father, isn't it, Vyasadeva? तो सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रवण किया And therefore he was selected to represent the parampara. और उनको चुना गया परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए। So he was he was empowered by those personalities to take that. उस पद पर जाने के लिए। So that is up to the acharyas, previous acharyas, to determine तो ये पूर्व आचार्यों के हाथों में है, वो किसको निर्धारित करना चाहते हैं, who they want to order and authorize to speak. वो किसको आदेश अधिकार देना चाहते हैं बोलने के लिए। That's my understanding. ये मेरी समझ है। Why is this complicated? ये इतना जटिल क्यों है आपके लिए समझ पाना? Because Srila Prabhupada in a commentary about Uddhava and Vidura and Maitreya told about Marjada, Vaishnava etiquette, about Srila Shukadeva Goswami, not in commentaries, not about Marjada. I think it has more to do with the quality of the devotees who are hearing and speaking. तो माता जी का सवाल है, मैं ये थोड़ी समझ नहीं पा रही थी कैसे जो वैष्णव सदाचार है उसको कैसे तोड़ा जा रहा है, जब बताया जा रहा है कि कम उम्र के लोग ऐसे प्रचार नहीं करते। तो वहाँ मर्यादा की बात की थी प्रभुपाद ने, वो मर्यादा वैष्णव सदाचार का पालन करे। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये ज़्यादा निर्भर करता है कि जो श्रवण करता है और प्रवक्ता है दोनों किस स्तर के हैं, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है।
Because also in that situation they want to say that you should hear from a more senior person. क्योंकि उस स्थिति में वहाँ ये भी बताया जा रहा था कि आपको ज़्यादा किसी वरिष्ठ व्यक्ति से जाके सुनना चाहिए, That you should not try to speak. कि आपको बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए. If someone else has more, how do you say, authority, authorization to speak, अगर किसी के पास ज़्यादा बड़ा अधिकार है प्रवचन करने के लिए तो उनको पहला मौका मिलना चाहिए. so it's not necessarily about gyan. तो ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है उसके आधार पे निर्णय किया It's जाता है. more about authorization. ये ज़्यादा निर्भर करता है किसको वो अधिकार दिया गया है. Because Krishna only speaks to his bona fide authorized representative in Parampara. क्योंकि कृष्ण केवल अपने आधिकारिक प्रमाणिक परंपरा के प्रतिनिधि के माध्यम से ही बात करते हैं. So other person may have more gyan, तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, but it may not necessarily be realized. लेकिन जरूरी नहीं है उसने सारा ज्ञान साक्षात्कार किया हो. And also it may not necessarily be that that person is authorized. और ये जरूरी भी नहीं है कि उस व्यक्ति को अधिकार भी मिला हो बोलने का. So it's not just a question of gyan, it's a question of the quality of the gyan, whether it's tattva vijnanam or just book knowledge. तो यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं है, वो ज्ञान की गुण, उसमें गुणवत्ता कितनी है, साक्षात्कार हुआ या नहीं, उसका तत्व विज्ञान प्राप्त है या And then नहीं. if it's just scholarly, academic book knowledge, then that also is not what is required to be authorized. तो अगर बस उसने विद्वता हासिल की, किताबी ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये सही योग्यता नहीं है, बोल पाने के लिए अधिकार नहीं मिल सकता. So that's a good point. तो ये एक महत्वपूर्ण बात है. Question of authorization, not gyan. तो यहाँ पे अधिकार का सवाल है, ज्ञान का नहीं. Second question, when manifest Paramatma Vishnu in our heart, or when manifest Krishna like Syamasundar? When Krishna Paramatma Vishnu form, he manifests as Syam Sundar. Krishna said, I am the Paramatma Super Soul situated within the heart of every living entity. तो माता जी पूछ रही हैं कि कैसे कब परमात्मा जो है अपने श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं, जो कि विष्णु रूप में परमात्मा रूप में हमारे हृदय में. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कृष्ण ने कहा वो है परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में स्थित है. And Krishna said, I am the source of all knowledge and intelligence and remembrance. और कृष्ण कहते हैं मैं सारे ज्ञान, बुद्धि और स्मरण का स्रोत हूँ. So Krishna, as Bhagavan, he is within the heart of every living entity, giving that internal intelligence, knowledge, and remembrance of him. तो कृष्ण भगवान जो उस रूप में हृदय में मौजूद हैं, वो उस रूप के माध्यम से सारे ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति देते हैं बद्ध जीव को. So Krishna says, know that I am that super soul. तो कृष्ण कहते हैं मुझे परमात्मा के रूप में जानो. So as devotees of Krishna consciousness, then we understand Krishna, he's in the heart of every living entity. तो कृष्ण भावनामृत के हम सारे सदस्य होने के नाते हम ये समझ पाते हैं कि कृष्ण हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं. Prabhupada said International Society for Krishna Consciousness. प्रभुपाद ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ. Someone said, why don't you just call God consciousness? किसी ने ये सवाल पूछा कि आप भगवान भावनामृत क्यों नहीं कहते? And Prabhupada said, because God, Krishna is God, Krishna is Bhagavan. प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भगवान है. So many times devotee of Krishna is always just saying Krishna. तो कृष्ण के भक्त हमेशा कृष्ण ही कहते हैं. Even though the Lord is manifesting, incarnating unlimitedly. यहाँ तक कि कृष्ण अनंत रूपों में अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं, लेकिन सभी को कृष्ण ही And in prominent incarnations, avatars. और जितने उनके प्रमुख अवतार हैं उसमें भी. But the devotee of Krishna will say, oh, Krishna is doing like this, Krishna is manifesting like this, Krishna is avatari, he's coming manifesting for particular leela, for particular teaching. लेकिन कृष्ण के भक्त कहते हैं ये कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, कृष्ण ने ये अवतार लिया, कृष्ण ने ये काम किया, इस विशेष उद्देश्य का प्रचार करने, वो सदैव कृष्ण कहते हैं. Krishna is coming as Lord Nrsimhadev. कृष्ण नृसिंहदेव के रूप में आ रहे हैं. Krishna is coming as the Buddha. कृष्ण बुद्ध के रूप में आ रहे हैं. And so Krishna's avatari, he's manifesting in all these other different avatars. तो कृष्ण अवतारी हैं, वो अलग अलग इन अवतारों में प्रकट हो रहे हैं. So the devotee of Krishna says, oh, that's Krishna, that's my Lord doing all of these wonderful things. तो कृष्ण के भक्त कहते हैं ओ ये मेरे भगवान हैं जो ये सारे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं अलग अलग रूपों में.
And when Krishna wants to give Krishna prema, then he comes as Mahaprabhu. और जब कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं तो महाप्रभु का रूप लेके आते हैं. So then we have to try to understand all of the teachings, instructions of Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees. यानी कि हमें महाप्रभु के भक्तों के सारे शिक्षाओं को, उनके इस प्रक्रिया को जानने की जरूरत है. Krishna is giving those instructions through Mahaprabhu, Mahaprabhu Parampara. क्योंकि कृष्ण वो सारे निर्देश महाप्रभु के परंपरा के माध्यम से देंगे. So we have to try to qualify ourselves, understand it properly. तो हमें अपने आप को सही तरीके से योग्यवान बनाना होगा और सही तरीके से समझना होगा. Cultivate and practice those instructions. और ये सारे निर्देश को हमें अभ्यास करना होगा ना. In order to deserve such mercy, ताकि हम उस भगवान के अहेतु की कृपा के लायक बन सकें. Does that help you? क्या आप समझ पाए? Yeah. Okay, everyone. I don't want to go too long. तो धन्यवाद सभी का. मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता. over. हम पहले समय से आगे निकल चुके हैं. So thank you very much for your kind attention बहुत धन्यवाद आप and सभी का ध्यान your देने के लिए. patience with me. अपना धैर्य मेरे साथ बनाए रखने के लिए. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki. Now you take some Mahaprasad. Oh, I see. Acha. Okay. Like the Shoda Maharaj Vyas Puja Day celebration ki.